Okay, so yesterday we were trying to create the notebook, and let me just open the Azure Databricks. This is mine, right? So we had created the compute here, or you can say the cluster here. So Sharad, if I say about the steps, so I was discussing about the Excel file, right? So you have created an Excel file. Now you want to calculate something inside the Excel file, correct? Yeah. When you have some data inside the Excel file, you have, let's say, two columns where you have quantity and you have the price. Now you want to calculate the total sales or total price, whatever, right? So when you calculate something, what you need? You need compute power. If I say about the Excel application, so this is Windows who is providing the compute power, right? So it is the operating system who is handling all those things. Okay. However, here we need the compute power to perform your transformations. Now, inside the notebook, you will be using the Spark engine. Spark will be running over the machine, right? And that is virtual machine. Okay. And the virtual machine calls here compute power or cluster. So you need a machine that should give the power to your Spark engine to work on your transformations. Clear now? Okay. And in case, Harish bhai, if we don't create compute power, still we can create folder and upload, import the files. Creation is something different, right? If I say, okay, you do not want to use any asset, but you want to create it. So creation is a different process. Using is a different process. Is a different process, right? So using something is a different. So if I say, okay, you have built your house, but you are not living inside the house. So if you are not living, that does not mean you will not go to build the house, right? You will build the house. Yeah. Yes. Why we are building the house? To live there. So why we are creating the cluster? To use it. If you do not want to use it, then probably you will not able to run the Spark engine. Correct? Okay. So that is why we like use one connections between the compute power and our notebook. Yes. So here, okay. So see, we have not started the cluster. So what I do, if I do one thing, either it will, okay. So I don't want the serverless. Yeah. I want mine. Actually, I wanted to remove that. If I see, generally, if I will remove it, what will happen? It will, again take much time to create the cluster. So I'm not going to remove it, but yes, to run the Spark codes, just like, we are using the Spark here, right? So we are importing the libraries here. So when you run your cell here, it need the power, and that power is coming from the cluster. So it is getting to restart. Yeah, it is just restarting. Just wait for a few seconds or minute. Then once it is green, we will start working on that. Clear? Sorry. Actually, my camera is not working properly today. It is just it is placed on the holder, but somehow it is just getting down. So that is creating some disturbance. I'm sorry. But it's okay for us. No problem. Okay, just waiting for cluster to be started. If you are
also working with me, please start your cluster. Yes, bhai. Sir, for a starting cluster, do we have to go and study we like disconnected or like terminated the cluster? Do we have to go and start that one? Not from there. You can directly, start from notebook itself, right? So come inside the notebook and you can see here, yeah, it is there. You can just start, yeah. It says terminate, it says start. You will see the start button there, just or start option there. Just select it and it will start the cluster. In query, I just press like enter with the shift, and Yeah. it's running currently, and Yes. I So it don't will see any get option start. there for Yeah. start. So either way, yeah, that will work. That will work. Thank you. I got an error. I'm just sharing my screen first. PySpark.function. That not starting for you, Sharad? It started. I am getting error by. Okay. I hope my screen is visible. Did you share your screen? Yeah. Let me stop that. Yes, sir. For you have to stop, then you will able to see. Okay, so there is an error in your code, I think so. Yeah, it's Hi. suggesting you, if you see on the second line, it's suggesting you there is, I think there is a problem of the space, I think so. Yeah. So no module name PySpark dot functions. Yeah. So there is a spelling mistake. If you see FUNCTIONS, correct? And you have written Oh, FUNCTIONS. okay, okay. Yeah. Oh, sorry. It's That's very okay. good that it's providing the alternate solution as well, Yeah, it right? will always suggesting you. Yeah. So just go with it. That's okay. So do not click on Run. run all, right? Because we are going to work on different cells. So if you will Okay. click all, if you click on run all, what will happen? It will execute all the cells at the same time. But we do not need it. You can go step by step. You don't. Where is the Where is your cluster? here? This is my this is my workspace. I have created folder and inside folder notebook. Where is your cluster? It's a serverless. In Serverless. your serverless, have you selected anything? Yeah. See, serverless. I'm not recommending. Why serverless is much costlier, right? So So do not my use that. cluster is this one. Yeah, it should be there. Why it is not there? Can you restart it? Start. Okay, okay. I got it. Now it's being started. Yeah. Okay, now I have Let us to go start. back to workspace, folder Sharad empty, and notebook. Again, I have to run Paji. No, because first you have to attach your cluster. It is showing serverless, right? So from here itself, I have to attach. It is not started completely. It was like Yeah, just buffering hold on. there. Let's just start there. It will take some time. You can see in the stays in the first column. It is showing still it is buffering. सर ये कंप्यूट पावर आवरली चार्ज करता है क्या? Yes, you can say hourly. Will not say it's it's taking whatever time you are using the cluster. So compute power जो भी use हो रहा होगा ना 10 मिनट के लिए use करो वो 10 मिनट के लिए बिलिंग होगी. राइट सर, लाइक फॉर एग्जांपल अभी ये स्टेट इसका अपडेट होने को टाइम लग रहा है, करेक्ट? हाँ तो अभी नहीं सो चार्ज होगा एवरी टाइम, या करेक्ट, ये एवरी अभी. टाइम जब हम डेवलपमेंट में है, जैसे हम नोटबुक को बना रहे हैं, ठीक है, सेल बाय सेल हम क्रिएशन पे है, तो उस टाइम पे लाइक यू सेड कि पहले पूरा बना लो एंड उसके बाद में एक साथ उसको डिबग करो, लाइक फॉर देखो एग्जांपल यहाँ ये पे. चीज जो है ना करण होता क्या है ना कि when you are practicing, when you are learning, in that case you cannot do that in that way, right? Because you are not
you are not perfect on that coding, correct? Once you are used to used to with the coding methodology, I can say, or you are well versed with the business logics, you got are, that, sir. Got that. then in that case I understand. Just like when we working on the programming language, what we will do, we create all the whole the script and then debug it, correct? सर ये कोई जुपिटर नोटबुक या कोलैब में पाइस्पार्क का लाइब्रेरी इंपोर्ट करके हेल्प नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग को? फिर से बोलो, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्वेश्चन। लाइक फॉर एग्जांपल जब अभी एक पर्टिकुलर सेल में हम पाइस्पार्क के लिए कोड लिखेंगे, ठीक है, वही सेम चीज हम जुपिटर या किसी कोलैब नोटबुक में नहीं कर सकते क्या? पाइस्पार्क वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करके लाइब्रेरीज को? नहीं तो स्पार्क आपके पास वहां पर देखो, स्पार्क की लाइब्रेरी अगर है तो कर सकता है, ये डिपेंड करता है स्पार्क इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ओके, है ना, यहाँ पर तो डेटाब्रिक में स्पार्क ऑलरेडी है ना, क्लाउड पे ऑलरेडी है, तो इसलिए हाँ, मैं यहाँ का तो समझ गया यूज केस, है ना। मैं जस्ट इन केस क्यूरियोसिटी से पूछ रहा। जस्ट क्यों मोमेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू। मेरा तो काफ़ी टाइम से सर वो प्रोसेस ही नहीं हो रहा है इसको बंद करने के बाद भी। Okay, so The cluster terminated due to error. Azure. guys, you understood how to create the cluster, okay? Correct. Now go back to your notebook. For time being, for practice purpose, for practice purpose, use the serverless. Generally, what is difference? Let me just show you what is difference, or let me just tell you what is difference between the serverless and the general purpose, right? So let me share the screen and I will discuss it. So when I say I'm using my cluster, right? In that case, what is happening? It is only managing my workspace. Just understand, right? And when I'm saying I'm using serverless, then it is managing all the Databricks. So inside all the Databricks, we can have multiple servers. Multiple workspace, or multiple notebooks can be run at the same time. So serverless is something which is managing everywhere, right? However, the cluster which I have designed or I have created attached to my notebook, that is only for me and for my workspace. Now, what will happen if in your organization many people are using serverless? It will load to the server, right? Correct? Maybe you will see the slowness because of everybody using the same. However, if you are using the cluster which is specifically attached to your notebook and you have designed it, created it, that is assigned to your workspace, it will be free for you only. I mean to say, other people cannot use it, right? Or other people cannot load it. I mean to say, when they are using something else, so you will not see the slowness on that. There is a difference. However, if I say about the, we can say the faster startup time, so serverless is more faster than your general purpose. Clear? So which is best for our case, or which is best for what scenario, right? So serverless is best for SQL, notebook, lightweight, ETL, interactive analytics. Yeah, these things. Whereas general purpose is best for development, debugging, custom libraries, and long running jobs. So why? Because we need free space, or we need free machine to assign my notebook. Yeah. So serverless has limited libraries, whereas your custom or your general purpose has fully supported. I mean to say it supports fully. Yeah. So it has a lot of libraries there. Clear? So for our purpose, if you want, you can use serverless. If this is running for your notebook, fine, use it for a time. Yeah. Do not go for the for the cluster. It will take time to run. Or if it is creating issue or error, then probably we need to change the machine's configuration. Is that clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So now what next?
Did you type this code? Anyone? Yes, sir. Type and run. Okay, so I'm just running this. Yeah. First time it will take time, otherwise it will run fast. Okay. Okay, that's fine. So now what I've done, I have just pressed shift and enter. So it will create a new cell, right? What I'm trying to do here, I'm trying to read the CSV file from the blob storage. Now, for blob storage, before we read the blob storage, we need to configure something. Yeah. Okay, before configuration, just try to read it. Let's try to read it. If it does not work, then probably we need to configure it. Right? Okay, so let's do one thing. Create a data frame, and let's say we try to read customer CSV. So customer df spark dot read. Yeah. And then it's already showing you. However, I'm just going with my way of writing. Yeah. It is showing, right? So if you just see, it is showing. So okay, let me just type it, right? Probably you can understand it. So first thing, we need header. Okay, just give a moment, guys. Just give a moment. Can you hear me, guys? Yes, sir. Yes, yes. My camera is actually getting down 2 times. It just fall down. Okay. Okay, then okay. So that is the one thing which I want. Oh, sorry, it should not be here. It will generate the error. Okay, then we need. Okay, it is already showing us. So we also need the schema that should be read it, and then probably we need. Let me just show you something. Just need its CSV. That is okay. Then we need the whole path here, right? And the path, how you get this path, just understand it. Actually, it is the storage terminology which we are going to use, that is ABFSS, that says the Azure Blob Storage way of understanding. So we write ABFSS, and then yeah, it's already showing me, right? So Sir, can you increase a size little bit? Okay, It is too difficult to. Okay, let me just type it, and I will increase it. So customers, I will show you just a moment. There is a customer's data, right? Okay, that is a container name, and this is inside sales dot df s dot code. That you have to understand. Let me just it is showing me. Okay, just give a moment. But that is not correct. It should be CSV. Okay, let me just delete everything. Okay, now I do not go with that, right? It is just suggesting everything. Sometimes it's irritating, right? Yeah, can you see? Okay, so can you see now? Is it okay? A little bit. A bit more? Yes, sir. Little bit more. Yeah, that's fine. Okay. So we are trying to, okay, guys, this has to be understand, because this is the way we write the path, right? So this is nothing. This is our container, customers data, and this is our
this is our container, this is the folder, right? Let me just go inside the Azure portal here and go inside the storage. Sales. Okay, then go for the container. Okay, so this is the customer's data. If you see, so I have written this customer's data here, and then it is under sales, right? So if you see, okay, just give a moment, guys. Sales, STG sales. Let me see if this STG sales will work here. STG. हाजी हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम कॉपी कर ले पाथ अपने ब्लॉब स्टोरेज में जाके और यहाँ पेस्ट कर दें. Let me just see if it is showing us any error or it does work. Okay, that works, right? So generally what happens, this is not available. Even you have the URL. If you just see on here, you have the URL, but that URL is in HTML format, right? If you copy it, it will show you the HTML format. Version snapshot. No. If I click on properties, let me see if it is somewhere available. But this is the URL format, right? This is HTML. HTML we do not need, right? Now I cannot see where I can. No, that is different. No, that is not. Okay, so yeah, so we do not have any option here. I cannot see any option where I can see the path. No, in settings. Do we have metadata? Nothing there. Properties. Always it's showing me in HTML, right? And we need in the format the storage is. So you just understand this way, and here you just type your container and then your storage account. Yeah. So I have just run it. Yeah. So let's see what it shows us. Just for displaying the data frame, you can just use the display here, and inside the display give the data frame name, right? Customer DL. Yeah. So let it run and see if it is showing the data. Yeah, we are just trying to read the data here. Oh no, it's not showing us. Sir, where it is, where the data we have the in a storage account. Yeah, blob storage. You have the CSV, right? Okay, maybe we need to configure the storage first, right? Oh, sorry, configure the Spark first for the storage to be read. So this will not work until we will configure it. So let me just configure it first. So I will have a new cell here. Just click here and probably you will see plus here and just configure something here. So let's say Spark dot conf dot set. It is already showing you. If you see, just take it like this, and then it says apps HTG sales. It's already taking that TFS code. That is okay. That is okay. Storage scope. Scope is storage scope and key. Here we need the security key. So if I do one thing, if I just give a moment, let me just have the key first. So inside the storage account, we should have a access key there. So if you go here inside the security and networking, you could have access key there, and here you have the key. If you see, just copy this key and paste it here. Yeah, and let's see if that works. Now
Yes, just a moment. If I remove this whole part, that works, right? Uh, just give me, guys. I'm just trying to now sort this out. Stage TFS, okay. Let me just do one thing here. Okay, that is struggling with the DFS. Okay. There are two type of storage. Right? One is ADLS Gen 2 and second one is blob. So our data is stored inside the blob, and in there are difference between the configuration of blob and the ADLS Gen 2. So that we have to correct it probably. Let's see. It should go inside the blob instead, right? So let me just see. Okay, that does not show any issue. And then this is also for the ADLS Gen 2. So let's have that WASBS. Okay. Custom blob. It is also blob, right? It is not DFS. This is for Gen 2, right? I'm sorry, guys. Just taking a few minutes to sort it out. Probably once it is sorted out, then probably it will work, right? Okay, so the problem was we were using ADFS, right? And that is for ADLS Gen 2, right? So we have to use first thing here the blob. The second thing is here ADFFS is actually for the ADLS Gen 2 and WASBS for the blob storage. And you also have to change the ADFS here also, correct? No, You get it? could you repeat it once since from the starting? Okay, so very first thing what we have done, we have imported a library, but however we are not using this library as of now. What we are trying to do, we are trying to configure
the storage account to the Spark, right? So here the important part is this one. In this entire string, you have to see this one. Here for ADLS Gen 2, you have to type ADFs. Yeah, we have written earlier, right? Did you copy somewhere or it's just written? आपने We have create typed किया it. है? We have typed it. Okay. Yeah. Correct. Okay. So let me just make it like this. So we had DFS, right? So this DFS is for ADLS Gen 2. Now for blob, you have to type blob here. The only one thing that we have changed. And the next thing here, if you remember earlier, we had, let me just make it like this. Here. ABFSS, that is for ADLS Gen 2. This DFS is for ADLS Gen 2. We need to change both of them. So it should be WASBS for blob, and also here you need to change the blob from DFS. Now it will work for the blob. Earlier it was trying to access the ADLS Gen 2 where we do not have anything. Yeah, we do not have. I'm sorry. पाजी कोड कॉपी करके चैट पे दे दो those steps first. I think that code will not work for us because our blob storage and the file path is different then, sir. Yeah, so you have to change it, right? See, you can see here you have to change. This is the storage account, right? So here when accessing your storage account, right, you need to copy your access key from the storage account. How you copy this? You have to go to the storage account. Let me just show you something. You can go there. So inside the storage account, here on the left hand side, you will see security and networking. Yeah. Underneath that, you have access key. Click there, and then you will see key here. Just show it and copy it. That's it. Okay. Sir, let me share my screen. Okay. सर एक बार कनेक्शन स्ट्रिंग भी दिखाइए ना क्या है कोई ना एक बार दिखा लीजिए तभी सर वो जो की था एक्सेस की उसके नीचे कनेक्शन स्ट्रिंग भी है जो हिडन है वो एक बार चेक कीजिए ना कैसे दिखता है शायद वो होगा लिंक ये है लेकिन ये लिंक ना HTTPS पे है ओके आई थिंक सो HTTPS के जगह पे हम लोग ABFPS या फिर वो जो आपने अभी वेब का किया था हाँ वो WASBS वो यूज करना वो शायद हम HTTP की जगह रिप्लेस कर सकते बाकी तो पूरा स्ट्रिंग सेम लग रहा था एक बार करके देखते हैं देख लो सर माय स्क्रीन विजिबल टू यू पाजी वो कोड दो जब तक आप इस मन्नू को बता रहे हो वो दोनों कोड शेयर देखो मैं एक काम करता हूँ देखो मैं एक कोड दे रहा हूँ ठीक है चैट पे सर आप चैट पे डाल दीजिए वो की और वो हम ये कॉन्फ़िगरेशन का ठीक है आपको चेंज क्या करना है आपको की चेंज करना है ये कॉन्फ़िगरेशन का स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन का इसमें स्टोरेज अकाउंट का नाम और की दोनों चीज चेंज करनी है ठीक है और दूसरा कोड जो है वो है रीड का मिल गया दोनों मिल गए हाँ जी Can you copy it best? पाजी कॉपी कर लिया Okay. Now what you have to change? Understand first. What you have to change? You have to see fs.azure.account.key stg sales, that is storage account. So you copy and paste your storage account name here. storage account. You can copy from the top. Yeah, Manu storage Manu file. Okay. Storage Manu file. Yeah, copy that. Okay. Now next blob is okay. Now this is the access key, right? You do not need this access key. Remove everything. Yeah. Go inside the storage account. Here on the left hand side, you will have network and security.
Security plus networking. Third one. Yes, this one. You have access key. Click there. Okay. Now you have the key, right? Yeah, just need it. Now it should connect. Why it's saying not available? Configuration fs.azure.account.storage manual file. Is that full name? That is right. Storage account. Can you show yours again? The access key. Go to your notebook. सर फोल्डर नेम एंड फाइल नेम अलग होगा ना लिंक में अभी हम जो ना अभी हम फोल्डर में जाएंगे अभी हम क्या कर रहे हैं हम जो हमारा स्टोरेज अकाउंट है ना उस स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है या सो इट शुड नॉट गिव द एरर just hold on the screen हाँ सेम एरर मेरे में भी आ रहा है oh, and that error is because of serverless Manu, you have the cluster? Serverless is not having this, actually it has a limitation. So it will not work in this way. Yes, sir. So this is the one you are talking about, sir, or compute? Yeah, this is the notebook, right? And compute. Try the compute, right? I have, sir. Error is state you can see first. Do I need to go and start, sir? Yeah, start and attach this server. Oh, sorry, this compute to your notebook. This is already started, but don't know why it is just stopped here. And mine still working. तब से start किया हुआ है. You are using serverless. लेकिन सर यहाँ से तो मैंने इसको स्टार्ट पहले किया था फिर ये तो चल गया था एक अच्छा सर्वरलेस है ये serverless because of serverless it's not working Okay, so it will take time, sir, right? It will take few minutes. Do I need to go and switch, sir? Here, switch. Yeah. Okay, it will load. Then might be it will work. And here, sir, 1 second. Storage.
storage account. So if I click on a storage, Mhm. how can I see my all the folder customers and containers, sir? Just type container there on the left hand Oh, side search. directly. No, just inside the search on the left hand side. Oh, here. Yeah, just type container. Container. Okay, got it. Sales data. And in sales, I have a customer. Okay, got it. This one is still loading. बाजी तब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दूं. हाँ हाँ आप करो, मैं तब तक स्टॉप करता हूँ. पाजी ये तो चल नहीं रहा सर्वर. बार बार कर दिया इसे मैंने. Okay, creating issue. Then you have to delete this cluster and create a new cluster. ओके चलिए मान लिया ये हो गया. अब मेरा एक यहाँ पे देख लीजिए एक बार. Okay, give me a moment. Okay. So yeah, show me. Yep. बाजी आपकी स्क्रीन आ गई. ये मेरा आई होप दिस इज विजिबल टू यू नाउ. Yes, it is now. ओके पाजी यहाँ पे से मैंने एक्सेस की कॉपी कर ली थी. Mm-hmm. वैसे एसटी स्टोरेज है. ठीक है Mm-hmm. अगर मैं एसटी स्टोरेज में भी जाऊं. Mm-hmm. एक सेकेंड मैं दोबारा से दिखाता हूँ. एसटी स्टोरेज के अंदर मेरी कंटेनर के अंदर दो फाइल्स हैं. सेल्स डेटा है. Mm-hmm. राइट. अब इसका जो एक्सेस की करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे. यहाँ पे नेटवर्क एंड समथिंग टाइप करना था. वो वहीं पे था, बाहर था स्टोरेज. वो देखो, ये कंटेनर के अंदर, कंटेनर क्या है, एक स्टोरेज अकाउंट के अंदर फोल्डर है, और जो एक्सेस की है ना वो स्टोरेज अकाउंट लेवल पे है ना, तो वो तुमको वहीं मिलेगी. तो इसी में ही कंटेनर स्टोरेज के अकाउंट के अंदर. अंदर जाओगे, स्टोरेज के हाँ, अंदर जाओगे, और स्टोरेज में ही आपको दिख जाएगा आपका एक्सेस की. क्लिक करो. यहाँ पे नहीं, स्टोरेज में तो जाओ. स्टोरेज पे. हाँ, अभी हाँ यहाँ ये पर सर्च जो आ रहा है ना, इसमें देखो है नीचे एक्सेस की. यही कॉपी की थी मैंने. हाँ, ठीक है ये कॉपी. एक्सेस की कॉपी कर ली. एक मिनट जरा वो खोल. बहुत सारी चीजें थी. ठीक है सबसे पहले मैं एक्सेस की यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ. हम्म, ठीक है यही की थी मैंने पहले भी. यही की थी. ठीक है. और नीचे भी कहीं करना है कुछ. हाँ, यहाँ पर हम WA वाला लिखेंगे. देखो दिखाता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको जो ना भेज रहा हूँ, मैंने भेजा हुआ है, सॉरी. WASBS करके है ना, वो उसको मैंने भेजा हुआ, पाथ देखो उसका, उसको देखो, चैट पे देखो. हाँ जी एक सेकंड. चैट का. हाँ जी WAS वाला यहाँ पे चेंज. यहाँ पे क्या डालना है पाजी. हाँ, तो पूरा कोड में दिया ना. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, कस्टमर्स डेटा, ये क्या है, कंटेनर नेम है. तो आपका कंटेनर नेम क्या है, सेल्स डेटा करके देखना, एक बार चेक करना. कंटेनर नेम है एसटी शरद. राइट ये. नहीं, ये तो स्टोरेज अकाउंट है. इसके अंदर देखो होगा कंटेनर, जब टाइप करो यहीं पे, यहीं सर्च में टाइप करो ना. कंटेनर टाइप हाँ, करूँ. देखो नीचे कंटेनर है. ठीक है. नाउ दिस इज द से, सेल्स डेटा.
Now you type sales data there. सेल्स डेटा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपका ये ऊपर चेंज करने की जरूरत है? एक मिनट जो fs.azure.account.key that is your storage account blob.code, that is okay. ऊपर कुछ नहीं चेंज करना, सही करेक्ट है। रन करूं, कॉन्फ़िगर नॉट अवेलेबल नहीं विदाउट, आएगा, वो सर्वरलेस पे हो ना, इसीलिए नहीं आएगा। यहाँ पर तुमको अपना पर्सनल कंप्यूट पर चाहिए होगा। को एक मिनट को, ये कुछ सजेस्ट कर रहा है, बोला तो बाहर आ गया। ये कुछ सजेस्ट कर रहा था, एक बार दिखाना वापस जरा अपना नोटपैड नोटबुक। रन करो दोबारा से, ऐसे रन करो, इस सेल को रन करो। सेलेक्ट नहीं करना है, एसक्यूएल नहीं है, सेलेक्ट करना होगा। मैं ओके, चलने दो चलने दो चलने दो, चल रहा है वो फिक्स करने की प्रॉब्लम। देखो देखते हैं, रुको रुको होल्ड ऑन, ये देखते क्या कह रहा है। स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट ओके कॉन्फ़िगरेशन डॉट सेट, जरा इसको एक्सेप्ट करो, लिखा हुआ है साइड में एक्सेप्ट एंड रन करो। एक्सेप्ट, देखते क्या कहता है, करो। कहाँ पे? अच्छा, हाँ हाँ, इस पे करो। नहीं, इट विल नॉट वर्क। स्पार्क कंटेक्ट इज नॉट सपोर्टेड ऑन सर्वरलेस है ना, सर्वर्स। वो सर्वरलेस प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं चल रहा है इसीलिए। मेरा तो सर्वर ही नहीं, कंप्यूट ही नहीं हो रहा है। अब उस केस में एक ही हो सकता है कि अगर ये नहीं चल रहा है तो आपको इसको डिलीट करके नया क्लस्टर बनाना पड़ेगा। वो बहुत टाइम लेता है भाई शरद। हाँ, हाँ, ये तो टाइम तो लेगा। अब या तो एक काम कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारे मेरे उसमें जाओगे तो वहां पर तुम्हारा क्रेडेंशियल्स नहीं होगा, यूज नहीं कर पाओगे। ये डेटाबेस थोड़ा सा आइसोलेटेड है। एडीएफ में तो घुस सकते हो, लेकिन कोई डेटाबेस नहीं, मैं अभी थोड़ी देर में क्रिएट कर लूंगा। पाजी बस एक चीज बता दो, ये जो नोटबुक में जो लिखा है वो सेव हो रहा है ना ऑटोमेटिकली? हाँ, वो तो सेव हो रहा है। ठीक है। एक चीज बता दो, इस कंप्यूट में कुछ मेरे एरर है कि नहीं है? मैं खोल के दिखा देता हूँ बस। डीबी अनरिस्ट्रिक्टेड, वो एक्चुअल में जो आपने मशीन ली है ना प्रेफर्ड यहाँ नोट पे टाइप में, यही प्रॉब्लम कर रही है। ये एक्चुअल में वो कर नहीं पा रहा है। इसमें उसको सही मशीन मिल जाएगी तो चालू हो जाएगा ये। नहीं, इसमें ले ही नहीं रही है। सर हायर वर्जन लेकर देखे क्या? 32 GB देख लो एक बार 8 कोर पे। देखो ये ले लिया, रुको रुको रुको, होल्ड ऑन, ये ले लिया। वो पीछे ले लिया था तुमने जो ये किया था। यही पहले वाला था। यही पहले वाला था, हाँ V3। हाँ जी। अच्छा, V4 देखो, V5 देखो। आप ये V5 ले में जाओ, लिया। V5 32 GB में जाओ। ओ, ये बहुत कॉस्टली है। प्राइस देखो इधर, 4 DBU पर आ रहा है। नहीं कॉस्टली तो कोई एक नहीं, काम हम करोगे, इसका। एक काम करोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ जो नीचे आना, और नीचे आना, और कुछ है 16 GB में। कैन यू गो अप, कैन यू गो अप, सॉरी सर गो वो, अप, गो अप। हाँ ये V4 रहा दिखा रहा है। स्टैंडर्ड 5, इस ये पे आ रहा करो, है हाँ इस पे कॉन्फ़िगर। करो, इस पे करो। 2 ठीक है, 2 ले लो इसे, कोई बात नहीं, इसे ले लो। ठीक है, सेव करो। सेव कहाँ से होगा अभी ये? ऊपर देखो, सेव करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, ऊपर जाओ, वो स्क्रॉल अप करो, नहीं है। एडिट किया था मैंने, बट सेव का नहीं ऑप्शन आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ रह रहा कुछ है। दूसरा सिलेक्ट करके देखना तो होता है क्या? एक बार ऐसे सिलेक्ट करके देखो। हाँ, ये कंफर्म में आ रहा है। एक काम करते हैं, इसी में देखो, जरा फिर से क्लिक करना। ओके, यहाँ देखो लिखा हुआ 24 मोर, इस पे जाओ 24 मोर पे। जरा इसमें देखो क्या क्या दिखा रहा है। 8 GB लो, 8 GB 2 कोर, देखते काम करता है कि नहीं है। हाँ चलो, ये तो बल्कि और इजी भी है ये। इसको स्टार्ट करो, करो स्टार्ट। मेरा तो चल गया सर। चल गया। यस। जब तक चल रहा है मैं फिर आप तब तक आगे बढ़ूँ, मैं तब तक और बताता एक हूँ। मिस्टेक मेरा हो रहा था वहाँ पे कि कस्टमर डेटा मैंने रखा था और फोल्डर का नेम सेल्स डेटा था, उसको मैंने चेंज किया, वो चल गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी डिबगिंग सीखे सर, 0.5% कोई इशू नहीं, सीख जाओगे, इन 100। नॉट अ बिग डील। वसीम, आर यू आल्सो फॉलोइंग?
Wasim, are you there? Yes, sir, he is. I think Sandeep dropped the call. Karan, Karan, are you there? Okay. So guys, what we have done till now, we have successfully set up the storage account, and then we have read the customer CSV, correct? And now it is showing us. So to see the data, we can use the display data frame name. Yeah, this one. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now, if you want to see the schema, right? Let me just show you the something. So let me just run it, and then it will take it off. Okay. Now here in the cell 4, I will type customer df dot print schema, right? And this is a function, so you have to type like this. It will show you the schema of the customer table, customer CSV. So if you see here, it's showing everywhere integer, string, 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 and you will see, the level equals to true, correct? So this is the schema printing. So if you want to see the schema of your data, you can also see this with print schema. Okay. Now, same way we have to read the sales data as well. So better you can type here the code read customer CSV हेलो file or data, whatever, right? हरीश, अभी मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा ना पिछला टॉपिक अभी बहुत एडीएफ पूरा छूटा हुआ है। Oh, तो that's इसलिए fine. इसलिए मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ सारा स्टेप बाय स्टेप। अभी देखना पड़ेगा पीछे से। हाँ, देख लो भाई, क्योंकि थर्सडे को मैं फैब्रिक का मुझे कैपेसिटी लेनी है, थर्सडे तो को। ये अजोर का आपका बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यू इससे हैव, या यू आज हैव, लास्ट है। आज लास्ट नहीं है, आपके पास वेडनेसडे का टाइम है। मंडे, जब ट्यूसडे, वेडनेसडे यू हैव इनफ टाइम, यू कैन प्रैक्टिस, राइट? फिर ओके। फैब्रिक चलेगा फिर। फिर फैब्रिक आ जाएगा, तो फैब्रिक पे आपको चीजें मिलेंगी बहुत सारी करने के लिए। और फैब्रिक पे कब तक रहेगा फैब्रिक प्रैक्टिस पे का टाइम? देखो, फैब्रिक पे वैसे मेरी कोशिश ये है कि मैं आपका ट्रायल वर्जन इनेबल करा दूं, जिससे क्या होगा कि आपको 60 डेज का टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज अगर कैपेसिटी पे चार्जिंग जाएगी तो फिर वो एक वहां बड़ा स्ट्रगल है। स्ट्रगल कैसे है? फैब्रिक की कैपेसिटी में 24/7 ऑन नहीं कर सकता। ओके। 24/7 में मुझे करीबन 30 से 35,000 का एक महीने का हिट आएगा, समझ रहे हो? दैट इज टू ह्यूज फॉर मी, है ना? तो मुझे क्या करना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कैसे फैब्रिक की कैपेसिटी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह चाहिए, शाम मैं को ये चाहिए? सोच रहा था मैं ये सोच रहा था कि अजूर का टाइम तो मेरे पास वैसे कम है प्रैक्टिस करने का। अगर मैं फैब्रिक से स्टार्ट करूँ और फैब्रिक सीखने के बाद वापस अजूर पे आऊँ तो ऐसा हो सकता है? अच्छा, उसके लिए मैं बेस्ट ऑप्शन बताऊं क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोग अजोर का फ्री सब्सक्रिप्शन बाय कर लेना 30 डेज के लिए, ठीक है? 28 डेज चलाना, 28 डेज में उसको कैंसिल कर देना। तो आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। पहली चीज, आपके पास 20,000 का क्रेडिट होगा, जिसको आप ओके। 24/7 प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो आपके ऐसा लिए कर ओपन एरिया हो जाएगा, ऐसा ठीक है? कर सकते हैं उसमें हम कि हाँ, हाँ, जैसे आपने 60 डेज फैब्रिक का दिया, तो पहले मैं 60 डेज से फैब्रिक पे फोकस करूँ और जब वो हाँ, हाँ, कंप्लीट हो जाए फिर मैं 30 डेज का अजूर का लूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल क्यों? कर सकते हो। क्योंकि देखो, दोनों एक तरीके एक हैं, टाइम पे, हाँ, एक टाइम दोनों पे मैं एक तरीके चीज पे हैं। फोकस करूँ तो वो देखो, हाँ, ये मैं चीज। समझाता हूँ यहाँ पर हम्म, हाउ वी विल प्रोसीड। देयर आर टू वेज। अब आगे आगे आपके ऊपर है, ठीक है? मैं आपको फैब्रिक पे ऑन डेली बेसिस लगभग 3 घंटे, 3.5 घंटे प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, ठीक है? तो लेट से मैंने 3 आवर्स आपको दिया। अब ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि कब आपको चाहिए, क्योंकि जो भी मेजोरिटी का टाइम होगा, क्योंकि मैं 24/7 ऑन नहीं कर सकता, ओके। अदरवाइज मुझे 35,000 अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मुझे आपको मैं दूंगा 2 से 3 घंटे, 3 घंटे मान लो, चलो मैं दूंगा, ठीक है? अब 3 आवर्स बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए डेली, बताओ तो आप करोगे भी नहीं, सब बताओ। 2 आवर्स भी करोगे ना, वही काफी है आपके लिए। हाँ, लेकिन मैं 3 आवर्स भी दे दूंगा। हाँ, अब मैं थ्री तो वैसे आवर्स शाम आपको के फेवर मॉर्निंग में में हूँ। चाहिए, इवनिंग में चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। इवनिंग नाइट 9 PM से 12 बजे के बीच में, उसके बाद वसीम, 6 बजे। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं
9 PM से 12 गाइस इट इज फॉर मी थोड़ा ओनली। लाउड, नहीं नहीं, थोड़ा लाउड बोलो वसीम, बहुत दूर से बोल रहे हो। भाई अब वसीम आवाज भाई आ रही है माइक के मेरी? पास आके बात कीजिए, बहुत दूर से आवाज आ रहा है, बहुत धीमे आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है क्या? आ बहुत रही धीमे आ ना रही है। ना, बहुत धीरे आ रहा है, लग रहा है आज खाना ही नहीं खाए हो। बहुत हेलो। दूर से बोल रहे हो। हाँ थोड़ा ठीक था, बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो हाँ बोलो बोलो। अभी आ रही है आवाज सही? हाँ अभी ठीक है। हाँ, अब तो लग रहा है कि खाना खा लिया अब। ठीक है। ये तो मैं ये कह रहा था कि मैं 9 PM से 12 AM तक जैसे रात को अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि दिन में ऑफिस रहता है। हम्म। तो रात को मेरे हिसाब से मतलब मेरे लिए वो टाइम सुटेबल रहेगा कि मैं उस टाइम पे कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये हाँ। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन क्या डिमांड करता है, ठीक है, क्योंकि सभी बंदे हैं। तो अब ये देखो, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि 3 आवर्स आपके लिए ऑन करूं, 3 आवर्स मनु के लिए ऑन करूं, 3 आवर्स उसके लिए ऑन करूं, तो वो तो 24/7 मेरे लिए हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ। सर आप एक तो व्हाट्सएप पे पोल डाल दीजिए हाँ, आपके मैं टाइम एक चीज स्लॉट के डालूंगा, अनुसार। अनाउंसमेंट डालूंगा, पहले मुझे फैब्रिक का कैपेसिटी ले लेने दो। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो मुझे फैब्रिक कैपेसिटी परचेज करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है क्योंकि वहां पर सीधे सीधे हिट है पैसों के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है, जैसे मनु ने भी अभी कल बात हम कर रहे थे, मनु बता रहे थे ना कि 365 का अगर हम अकाउंट हमारे पास होता है तो हम उसको फैब्रिक के ट्रायल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मनु, उसमें से ट्रायल कितने टाइम के लिए आता है? वो ट्रायल फ्री ऑफ कॉस्ट है 60 डेज के लिए। अच्छा। उसमें 24/7 आपके लिए कैपेसिटी अवेलेबल है। अब मैं सर एक चीज़ नोट किया हूँ उसमें कि उसको अगर जैसे कुछ करके छोड़ दिए तो फिर वो एक्सीड, मतलब वो नहीं होता है, मतलब उसका डेट एक्सपायर्ड नहीं होता है, फिर नहीं वहीं हो, पे होल्ड कर देता है, मतलब हाँ मेरे लिए। और फिर जैसे वो कुछ दिन बाद फिर एक ऑफर देता है कि योर अकाउंट इज पोस्टपोन्डेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है ना कि अगर हम फैब्रिक के ट्रायल कैपेसिटी को एनेबल कर सकें तो उससे क्या होगा कि यू विल हैव 60 डेज टू प्रैक्टिस, और उसमें कोई टाइम नहीं है कि कब प्रैक्टिस करना है कब नहीं करना, जब आपकी मर्जी तब करो। तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना। वहां पर बट मुझे उसका पैसे पे भी परचेज हिट नहीं आएगा, और प्लस आपको 60 डेज भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए पूरे। उसका परचेजिंग प्राइस कितना है मानो? सॉरी, मैंने तो उस फ्री ऑफ कॉस्ट किया था यार, आज से 2 साल पहले पावर बी सर्विस, वो पावर बी प्रो यही मैंने एक प्रॉब्लम है ना एक्टिवेट मनु। किया था फ्री। मनु प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है, स्पेसिफिकली जो अपना एशिया इधर कॉन्टिनेंट है ना, इस साइड में बहुत ज्यादा टाइट कर दिया है। पहले जो हमने, मेरे पास जो पहले जो अजूर का अकाउंट था ना, आज से 1 साल पहले, तो उस अकाउंट के थ्रू मैंने जितने भी फैब्रिक के ट्रायल एक्टिवेट कराए थे सब हो गए थे, मतलब बंदे लगभग 10-12 बंदों को मैंने कराया था, सबका हो गया था, सबने खूब बढ़िया काम किया। अब फिर मैंने दोबारा इवन मैंने परचेज कर रखा है सब्सक्रिप्शन को, स्टिल माइक्रोसॉफ्ट इसको अलाउ नहीं कर रहा है ट्रायल को एक्टिवेट करने के लिए। वो कह रहा है कि फैब्रिक की कैपेसिटी स्पेशली परचेज करो। यही एक प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर जो तुम्हारा केस है जिसमें 365 का इनेबल किया था, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम्हें तो पर्सनली बात। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर बाकी लोगों को एक्सेस दूं, मेरा भी बंद हो नहीं नहीं जाए। नहीं 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 मनु, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, और मैं तुम्हारे अकाउंट के साथ कुछ करना भी नहीं चाहता। मैं अपना अकाउंट खुद का बनाऊंगा, ठीक है, और उस अकाउंट से बंदों को एक्सेस दूंगा। बात समझना। देखो तरीका हाँ क्या होता है, एज एन हाँ हाँ। एडमिन सबसे पहले कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए। जब मेरे पास कैपेसिटी होगी तो उसमें यूजर्स क्रिएट करके, वो यूजर्स क्रिएट होंगे अजोर के अंदर। अजोर प्लेटफॉर्म पे यूजर जैसे आपने क्रिएट किया ना, जैसे अभी आपके पास स्टूडेंट 1 या फैब्रिक 1 करके आपके पास आईडीज हैं, ऐसे ही आईडीज क्रिएट होंगी फैब्रिक के लिए, और उनको मैं एक्सेस दूंगा उस वर्क स्पेस पे जो मेरी कैपेसिटी पे होगा। अब ओवरऑल कैपेसिटी मेरी यूज होगी, लेकिन काम सबके सब आप लोग करोगे। तो उसमें अगर मेरे पास 60 डेज हैं तो आपके पास भी 60 डेज हैं, तो आपको एनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां पर कुछ भी। आपको ना तो ट्रायल एक्टिवेट करना है, कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ मुझे करना है, मेरा एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें आप लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाएगा। हरीश भाई, मैं ये कह रहा था कि पहले आप 60 डेज का वर्जन दे देते 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि फैब्रिक सीखने में और उसको प्रैक्टिस करने में मतलब हाँ कहते हैं ना सर, किसी वो चीज थोड़ा को बचा। यूज टू हो जाए पहले, फिर हाँ। बाद में वहाँ पे कर हाँ, सकते उसके बाद फिर हम फ्री हाँ, ट्रायल वर्जन मैं 2 महीने का और ले लेते हैं। मैं खुद ही तो ये हम रिकमेंड कर रहा हाँ। हूँ। मैं खुद ही इस चीज को रिकमेंड कर रहा हूँ कि किसी तरह से मैं कर दूं आपका 60 डेज के लिए एक्टिवेट, ठीक है, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मतलब आपको दे दूं एक्सेस। अब आप 60 डेज प्रैक्टिस करो। मैं एक्चुअल में आप लोगों को उस टाइम फ्रेम में बांधना नहीं चाहता। आई डू नॉट वांट कि केवल 3 आवर्स है, इस समय प्रैक्टिस करनी है, वो सब चीजें मैं खुद नहीं चाहता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मुझे फैब्रिक की कैपेसिटी खरीदनी ही पड़ी तो उस केस में ऐसा होगा, लेकिन उस केस में आपको मैं 3 घंटे के आसपास डेली का दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, जब तक कि फैब्रिक में पढ़ा रहा हूँ।
हाँ जब एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा फिर आप अपना खुद का बाय कर सकते हो, हाँ, खुद का है फ्री ना। फ्री वर्जन लेके उस पे और प्रैक्टिस करके 4 महीने कहते हैं ना उसको, एनहांस हो जाए उसका वो कर अच्छे से। सकते हो, लेकिन अगर मैं सक्सेस हो पाया आप लोग के ट्रायल को एक्टिवेट करने में, ठीक है, तो फिर आपके पास 60 डेज तो मेरे पास से होंगे, और प्लस उस 60 डेज के बाद फिर आप अपना लोगे तो 60 डेज आपके पास भी होंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो वो हाँ एक सर, हाँ अलग वो सिनारियो हो बिल्कुल जाएगा, होगा, है ना। राइट। हाँ देखो मेरे पास से अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं परचेज करता हूं तो आपके पास डेली 3 आवर्स ही होंगे मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगर ट्रायल एक्टिवेट हो जाता है तो आपके पास 24/7 है प्रैक्टिस करने के लिए, ये डिफरेंस है, ठीक सर वो है। 3 आवर्स भी है ना सर, मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो थ्री हाँ, आवर्स थ्री इनफ आवर्स है, तो अगर मुझे लगता है क्लस्टर ठीक का है। ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ बस एक प्रॉब्लम यही है कि सबको कहीं ना कहीं एक हाँ, टाइम पे सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। सबकी टाइमिंग मैच हो जाएगी तो बेस्ट वो रहेगा। ठीक है सर, आप क्या हाँ कीजिए ना, व्हाट्सएप पे एक पोल डाल दीजिए, आप जब भी मतलब 4 ऑप्शन दे दीजिए टाइम स्लॉट के, 3 3 घंटे के, उसमें से जो मैक्सिमम सिलेक्ट कर लेंगे उसको अपन आगे कंटिन्यू कर। हाँ, जो भी बेटर लगे। नहीं तो ऐसा होगा तो एक बार 2 घंटे और एक बार 1 घंटे का ऐसे कर दीजिएगा, 1.5 घंटे का बस उसी में। दो ये भी टाइम दो देखो टाइम ये भी कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन रख सकते हैं, मैं मॉर्निंग का 1.5 आवर ऑन कर देता हूँ, इवनिंग का 1.5 आवर ऑन कर देता हूँ। बस मॉर्निंग में एनफ तो हो सर जाएगा। टाइम मुश्किल है, क्योंकि हाइब्रिड बिल्कुल चला गया ना, पहले वर्क फ्रॉम होम था तो चल भी जाता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, मॉर्निंग में तो मुश्किल है कि मिल पाएगा, तो क्योंकि दिन में तो किसी को टाइम मिलेगा नहीं, हाँ, जो मिलेगा मेरे शाम के हिसाब से टाइम मिलेगा। इवनिंग के टाइम पे सही रहेगा, या तो 6 7 बजे से 10 बजे के सर आसपास, ये वो भी आप टाइम। डेली डेली के लिए एक्टिव करोगे कि सिर्फ वीकेंड या ऐसा कुछ होगा? नहीं, डेली के लिए एक्टिव करूंगा ना, तभी तो तो मैं फिर पूछ रहा हूँ। इवनिंग का ही रखिए ना सर, इवनिंग का बेस्ट हो जाएगा सभी के लिए, मैं हाँ तभी तो बिकॉज पूछ रहा हूँ, अगर मुझे सिर्फ एक दिन के लिए 2 दिन के लिए एक्टिवेट करना होता फिर मैं नहीं पूछता, फिर तो मैं सुबह से लेकर शाम तक एक्टिवेट कर देता। 7 नहीं, 7 ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 8 से लेके 11 भी चल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा 8 से 11 खाना आगे बेस्ट पीछे कर रहेगा। लेंगे, डिनर टाइम तो हो जाएगा सबका एडजस्ट। ठीक, आई बिलीव। सही कह रहे हैं करण, सही कह रहे हैं। ठीक है, इस चीज को हम आगे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, लेट्स ठीक है फिनिश सर, दिस। अभी थोड़ा प्रोसेस करते हैं। हाँ, इसको वैसे डिस्कशन वो कर लेंगे 8 और में जैसा फिर होगा उस पर हम वैसे ही एक्शन ले लेंगे, ठीक है। एनीवे मनु, मैं एक बार कनेक्ट होऊंगा तुमसे, ठीक है, और ठीक है देखते हैं सर, कोई क्या प्रॉब्लम नहीं। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो बेटर पॉसिबिलिटीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग के पास किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, यू शुड प्रैक्टिस विद फ्री माइंड, है ना। कोई लिमिटेशंस ना हो, ये ना हो कि अरे यार 1.5 घंटे खत्म होने वाले हैं, 2 घंटे खत्म होने वाले हैं, और ये चीज तो बाकी है मुझे करने के लिए, मुझे करना भी है और टाइम भी नहीं है। नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम वो सब मुझे नहीं आधा चाहिए एक यार। एक घंटा भी अगर हम रोज का कंसिस्टेंसी के साथ निकालेंगे ना, तो भी हमारा मतलब लगता है कि वर्थ इट हो जाएगा। हाँ ऐसा वो तो लगता है। है, देखो मैं इसलिए 3 घंटे दे रहा हूँ कि 3 घंटे हाँ इनफ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, बंदा यार 1 घंटे काम किया उसके बाद कहता है 10 मिनट रेस्ट ले लूँ, फिर 1 घंटे फिर काम करूंगा, तो वो अलग अलग बात हो जाती है। बंदों की अपनी अपनी तरीका है काम करने का, ठीक है। चलो एनीवे, तो हमने अभी वी व्हाट वी हैव डन, वी हैव नो we have read the CSV file for customer. Now we are trying to read the CSV file for sales as well. सेल्स डेटा। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि सेल्स में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्प्ले सेल्स डीएफ, path not found. Okay, so probably there is some issue with the sales name, maybe. Let's see. हरीश, सर एक एक क्वेश्चन और पूछना था मुझे। बोलो। जैसे बाकी लोग तो साथ साथ चल रहे हैं, मेरा जब से एक दो क्लास मिस हुआ ना तो मैं थोड़ा पीछे रह गया। अब जैसे हाँ फैब्रिक स्टार्ट होता है, मैं जैसे नेक्स्ट वीक से अगर फैब्रिक स्टार्ट होता है और मैं ये अजूर का नोट्स बना बना के जैसे मैं पढूं, थ्योरेटिकल पढूं और थोड़ा सा देखूं वीडियोस वगैरह, और थोड़ा बहुत अगर मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, लेकिन जब फैब्रिक शुरू होगा उस टाइम पे अगर जैसे कोई इंटरव्यू हुआ उसमें अजूर फैब्रिक से आप पूछ लेते हैं पावर बीआई के साथ, तो ये मतलब खाली वीडियो देख के थ्योरेटिकल पढ़ के भी हम अजूर वगैरह कर सकते हैं? प्रैक्टिस तो कर ही नहीं है, मतलब बता सकते हैं इंटरव्यू को। पर्पस आपका इंटरव्यू क्रैक करना है, ठीक है ना, हाँ उसके लिए मैं रेडी करा दूंगा आपको मैं। हाँ हाँ, मतलब रिक्रूटर को ये लगना चाहिए कि इसको अजूर का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, गो थ्रू है, और फैब्रिक पे ही मैं फोकस करूंगा मोस्टली, क्योंकि मेन मेन पार्ट तो फैब्रिक है जो अभी इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, और जब कोई इशू नहीं है। ये टाइम कंप्लीट होगा तब बाद में अजूर को प्रैक्टिस करूंगा, ये सोच रहा यार हूँ। मेरे को बताऊं, इधर सच बताऊं, आई डिडंट गेट इनफ टाइम, अदरवाइज आई हैड दिस प्लान इन माय माइंड कि मैं कुछ जो ना पीडीएफ क्रिएट करके दे दूं आप लोगों को, जहां पर सारी चीजों की डेफिनेशंस और उनके स्टेप्स सब कुछ लिखा होगा,
ठीक है, तो मैं करूंगा, ये मेरे माइंड में है। आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई वाज जस्ट बिजी विद माय पर्सनल थिंग्स। ठीक है, तो लेकिन मैं करूंगा इस चीज को, जिससे कि आपको वो इंटरव्यू में हेल्प करेगी। वो तो ठीक है, मैं सर, वो हाँ, वो तो सर आप करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बट हम उसके नोट्स बना लेते हैं वीडियोस देख के भी। कोई मतलब नहीं लगता मैं इसमें कोई इतना मुश्किल। दैट्स ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट गाइस। हरीश भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। हरीश भाई, यहाँ पे जहाँ पे आप पाथ चेंज कर रहे हो ना, सेल्स डेली डेटा एट, ये एट एस टी सेल्स डॉट, ये कहाँ से लाए हो? ये स्टोरेज नेम बताया ना, स्टोरेज नेम है, देखो यहाँ पर मेरे स्टोरेज नेम जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं आ गया यहाँ पर, ये देख लो, एस टी जी सेल्स लिखा हुआ है, एस टी जी सेल्स देन कंटेनर। सो दिस इज द स्टोरेज नेम, करेक्ट। सो अगर मैं तुम्हारे स्टोरेज में देखूँ, तुम्हारा स्टोरेज नेम है शरद, शरद डी, सॉरी एस टी शरद, शरद है ये स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। यही आपको यहाँ पर डालना है एट द रेट के बाद। और ये ये जो, कंटेनर, ये देखो सिंपल सी कंटेनर लैंग्वेज का अगर नाम है। समझोगे ना, तो लैंग्वेज कहती है कि भाई कनेक्ट होना है ब्लॉब स्टोरेज से, इसको ऐसे पढ़ लो, कनेक्ट होना है ब्लॉब स्टोरेज से, वेयर एज कंटेनर नेम इज दिस दैट इज अवेलेबल इनसाइड दिस स्टोरेज अकाउंट। ठीक है, एंड द फाइल नेम इज दिस, एंड लास्ट वन। दिस इज द फाइल नेम विच हैज टू बी रीड। एक मिनट हो जाए। शरद, मैंने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए चैट में डाल दिया है लिंक। थैंक यू भाई। ठीक है भाई, वहां से पिक कर लो, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो इतना समझ में आ गया हाउ टू रीड इट। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? सर एक बार आप भी देख लीजिए, सही तो नहीं लिखा, आपने गलत तो नहीं कॉपी लिखा। आपने कॉपी किया है उसको कस्टमर के लिए? पहले हमने सेल्स डेटा लिया, कस्टमर डेटा लिया, फिर हमने सेल्स लिया। तो आपने सेम कोड को कॉपी करके सिर्फ उसका पाथ चेंज कर दिया यहाँ पे? हाँ, वो एक्चुअली में खुद ही, देखो जनरली क्या होता है ना, कि जब आप यहाँ पर लिखोगे ना, तो ये खुद ही सजेशन देता है। बस उस सजेशन पे आपको उन चीजों को चेंज करना है जो रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है, फिर ये स्टोरेज अकाउंट है, इसको मैंने चेंज कर दिया, बस, और सब तो सेम है। और सॉरी, फाइल नेम भी है लास्ट में। मैं तो सर समझ ही नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। नहीं समझ में आया? आपने इसको अलग से किया, आपने एक ही में किया, एक बार कस्टमर और एक बार सेल्स? हाँ, हाँ हाँ, वो एक ही सेल में दो रीड के कमांड लिखे हुए हैं। अच्छा, एक दो बार रीड के हम कमांड चला कस्टमर की हुआ है। फाइल रीड कर रहे हैं, एक बार हम सेल्स की फाइल रीड, ऐसा है। ठीक है, क्लियर। ये हमारा हो गया रीड के लिए। ठीक है, देखो ये तो हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर आप चाहो तो इस तरह से, सॉरी, इस तरह से आप लिख सकते हो। if you want you can give the command like configure the spark to access the storage account, करेक्ट। ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट सेल। उसके बाद इस सेल में हमने रीड किया हुआ है फाइल्स को। अब थर्ड सेल्स में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से फॉर कस्टमर, आई एम सॉरी, वी आर सेइंग फॉर कस्टमर डीएफ equals to customer. It always, I don't know how it suggests the things, it always suggests the things, yeah, but I do not need right now this way, yeah, customers. And sometimes it is frustrating, right? We do not need to do anything with the column. When you want to do with columns, then you can take with column. However, we need to drop the duplicates, so we say drop duplicates, yeah. And on which column you want to drop the duplicates, that is customer id, that is correctly written here, yeah. And you can also go for this as well. So for sales we will not say to drop the duplicates for order number, because a same order number can have multiple orders, right, multiple products, so we cannot drop it. But yes, for customer we have to drop the customer ids if it is having the duplicates. Same way you can also do the same thing, customer df dot, sorry, I'm sorry, customer df, sorry, come on baby, filter, right, filter, can you see?
it's just filtering the data, right? But that is not needed right now like this. We just need column. Yeah, that, see, this call function is coming from SQL, remember, and then we need what we have customer ID, we have, okay, let's have the customer ID, right? And this should dot is not null. This way. So what we are trying to do, we are trying to first here remove duplicate records from customer ID, and here we are doing what we are doing. We are remove null records. Yeah, correct, guys. Now you can run it. We are not generally displaying anything, so it's not showing us anything. However, it's not showing any error. That means everything looks fine. Okay. Now let's say we want to सर इसमें एक और फंक्शन था ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट, उसमें कुछ डिफरेंस है क्या? सजेशन में ही दिखा रहा हूँ. Drop, sorry, say again. It was drop underscore duplicates. Drop underscore duplicates. Before that, let's just display customer ID column and see what is the difference between them. Okay, so let's have that. Come on, here, right? Generally, it does not have any it does not have any, just give a moment. It does not have any impact because in PySpark it is same. Yeah, drop duplicates is simply a Python friendly alias actually, right? For drop duplicates. So drop underscore duplicates or drop duplicates, both are same. It is just aliasing the drop duplicates function as in drop underscore duplicates. Is it clear? I'm sorry, is that making sense? So if I just understand, you will understand it. Drop duplicates as it's as drop underscore, come on, duplicates. It is something like this. Did you get it now? So both are same. Yes? Yes sir, making sense. वो बस alias है, correct. वो alias है बस, और कुछ नहीं है. देखा in PySpark. Is it clear, everyone? Yes sir, let's just display customer ID column and see if it has done it correctly. Sorry, say again. Let's just display customer ID and see if it has done it correctly. Okay, you want to display it, right? Yes sir. Also the same command before removing the duplicate records. So different दिख जाएगा दोनों. Okay, so before and after the transfer. let's just see that for here, right? Display. So do one thing, because what will happen, it will, okay, let's do it. Let display then customer df, okay, and then copy it and then paste it, correct? Yeah, हाँ सर, null records के बाद में भी कर सकते, मतलब like this. You want like this, right? So generally, if I do one thing, it will show you. Can I just customer ID sir, customer ID. But इतना वो अभी identify करना मुश्किल है. Yeah, it's a huge data, right? So
it's showing. See, generally what happens, it takes for सर sampling. It just रो रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे ना, yeah, रो you can नंबर्स, just see, you can रो just see the नंबर्स. count, right? You can just take the count instead, right? Just हाँ take the count. Let's do one thing. Just let's customer df dot count, right? It should be count count, correct? So let me have that. Come on, like this. No, sorry, it did not copy. Copy. Just showing only 1000. So I have to see, because in the customer file we have the unique values actually, and we do not have the null values, unfortunately. Otherwise we have to, yeah, we have to add some null values and then see what is the difference, right? Otherwise it will not show, because we have the 1000 records, I do remember, and it does not have any duplicate and the null values. That is the reason it's not showing anything. हरीश भाई, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. मेरा हो गया है यहाँ तक आपका, और डेटा भी दिखा रहा है. बस एक कोड में जरा देख लीजिए आप. Yep. कस्टमर डीएफ फिल्टर कॉलम तो डुप्लीकेट वाला है और एक नल वाला है. Just hold on, let me just see. Where is your screen, man? Are you sharing that? हाँ जी, हाँ जी. I I'm think not sir stopped. you have to stop sir here. I can see Sharad's screen. I can also. No. Okay. Yep. Okay. now So it says here- customer df equals to customer df dot filter, and then you are taking the column. customer ID is not null. But it's showing error, right? Right. Because you have not imported, I think, the column. Did you import the library? Can you go up? This, Have you run this cell again? no, not. This call function is coming from SQL, right? I'm not sure. Is that? Oh, you have accepted it, right? run and You have accept. accepted it. वो चला जाएगा पुराना वाला. Control Z. Press Control Z. It's not there. I think that. ये कस्टमर आईडी डॉट डुप्लीकेट्स फिल्टर वाले में ये ऐसे दिखा रहा है. Just remove the call. Oh, what is that? Just can you remove those things? Yeah, just remove till call. Yeah. Now run it. Yep. Is not null में n को कैपिटल डालो, दोनों n. Just hold on. Can you do one? हाँ. n डालो कैपिटल, हाँ, दोनों कैमल केसिंग है, एन और एन दोनों भी कैपिटल upper चाहिए case. दोनों. Is केस not सेंसिटिव होता है. हाँ राइट. नीचे सजेशन में देखो ना, इज नॉट नल में दोनों भी एन एन कैपिटल. जो नीचे सजेशन आ रहा है ना PySpark के तरफ, इसको तो आप सिर्फ अपने वाले कमेंट में चेंज कर दो, दोनों भी एन को कैपिटल. रिजेक्ट करो, रिजेक्ट पे क्लिक करो एक बार. अब उसको चेंज करो, n कैपिटल करो, दोनों n. अब चलाओ एक बार. तो एक चीज ध्यान में आया अभी मुझे कि ड्रॉप डुप्लीकेट्स में भी वो कैमल केसिंग यूज कर रहा है. सो ऑल द फंक्शन नेम्स आर इन कैमल केसिंग इन PySpark. Sorry, say again. PySpark में सारे कमांड्स जो है, जो भी फंक्शंस है, वो सब कैमल केसिंग में. कुछ आया क्यों नहीं इसमें? डिस्प्ले नहीं किया है इसके लिए. अच्छा हाँ, डिस्प्ले लगाओ एक बार शरद. हाँ लगा. डिस्प्ले सिंटेक्स गलत लिख रहे हो. डिस्प्ले
कस्टमर डॉट और डिस्प्ले का भी डी कैपिटल नहीं है, स्मॉल लिखो। स्टार्टिंग में हमेशा स्मॉल होगा, उसके बाद जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उसमें कैपिटल। चलाएं अब अभी। रन करो एक बार। ये रन हो नीचे जाएगा दिख ना? रहा है? हो गया। हाँ चल गया आपका। एक चलिए, थैंक यू भाई। वेलकम। एक सेकंड नीचे जाना तो स्क्रॉल करके मेरे में भी अच्छा, कुछ एरर आ रहा है, इसको डिस्प्ले कैसे के डिबग करूँ नीचे, मैं? हाँ टेबल के नीचे कॉलम भी दिखा रहा है क्या? 3 रोज दिखा रहा है ना? 3 रोज, हाँ दिखा अच्छा, ये खुद का, ओके, ये खुद ये का खुद टेबल। बनाया है ना अपना? ठीक, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ओके। सर मेरा एरर आ रहा है, लेकिन फिर भी उसमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कॉलम ऑब्जेक्ट इज नॉट कोलैबल। कैन यू शेयर स्क्रीन? यस सर, हियर इट इज। लास्ट एग्जीक्यूशन इज फेल। और अगर मैं नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे, अच्छा इसमें सजेशंस भी आ रहा है कुछ। कैन यू रीरन दिस? तो इसमें मतलब फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल while writing a code and rest would be in case यस sensitive. यस यस, सर यहाँ उसको पे कैमल तो केसिंग बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है टाइप एरर और कॉलम ऑब्जेक्ट इज नॉट कोलैबल। कैन यू रीरन द कोड? यहाँ पे है सर, ये सजेशन में भी एक चीज़ दे रहा है। अब ये मुझे तो नहीं लग रहा है कहीं गलत है मेरा। Hold on, let me just see this. Filter call, correct. हरीश भाई, जब तक आप देख रहे हो, एक चीज और पूछनी है। ये जो डिस्प्ले कस्टमर डेटा फ्रेम है, ये हर कोड की, जैसे हमने 2 कोड लिखे थे, नॉट नल, और एक लिखा था हमने फिल्टर नॉट नल, और दूसरा लिखा था हमने ड्रॉप डुप्लीकेट। मतलब हर कोड के बाद हर कोड की लाइन के बाद हमें डिस्प्ले कस्टमर डेटा फ्रेम करना चाहिए, या लास्ट में एक बार लिखेंगे तो वो ऊपर वाले दोनों कमांड्स को रन करके सिंगल आउटपुट देगा? जनरली हमें डिस्प्ले करना ही नहीं चाहिए। Why? Because we are not going to see the output inside the notebook. This notebook is going to be run inside the pipeline, correct? So it should be internally work. However, to see the output, we use the display command. Yeah, it is for just see the output. You don't have to use it everywhere. Wherever नहीं, you want to see I the got output. your point. I got your point. I got your point. मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब डिस्प्ले कस्टमर डेटा फ्रेम जो है, वो मुझे हर कोड के बाद डालना पड़ेगा, या मैं नहीं हर डालना है ना, वही तो कह रहा हूँ, नहीं डालना है आपको। देखो, जहां आपको देखना चाहते हो, जैसे होता है ना कि मैंने देखा कि मैंने ये लाइन लिखी, अब मैं चाहता हूँ उसका आउटपुट दिखे मुझे क्या है, तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज नहीं लिखूंगा मैं। ठीक ठीक है। कहीं सर स्पेस तो नहीं है यहाँ पे? कुछ ऐसा है नहीं है, मुझे अच्छा नहीं स्पेस है यहाँ पे, स्पेस था आई बिलीव, वो इसके लिए दे रहा था। केस सेंसिटिव है वैसे, याद रखना। जो ये पाई है लेकिन ना, फिर भी ये आ रहा है, ये मुझे लग रहा है अटेम्प्टिंग टू फिक्स। नहीं Okay, फिर भी आ accept रहा and है। run. Just accept it. Let me just see if it is also showing there. I want to see what it shows actually. नहीं अब तो चल गया, चल गया सर, चल गया। वो पता नहीं क्यों एरर दे रहा था, मैं कब से ट्राई कर I mean, रहा I'm था। also not, sure on that. ठीक है सर, थैंक यू। शायद कोड में नहीं, कमेंट में होगा। नहीं कमेंट में भी कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि वो एक्सेस करने के लिए वहाँ पे ऐसे दे रहा था, लेकिन जब मैं डाल रहा था तो हाँ, मैं भी error ढूंढ रहा था, मैं बहुत रीड कर करके ढूंढ रहा था, बट दिखा नहीं। मैं भी तो 3 बार देखा, इसलिए सोचा कि बाकी लोगों के नज़र भी देखते हैं कहीं कुछ आई है। थिंक तो सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स में डिफरेंस शायद, बट उसमें भी नहीं नहीं, placeholder से इसके लिए आगे वो पीछे नहीं मत। देगा। सजेशंस में तो ठीक ही दे रहा था उसको, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, रन हो गया, गुड। चलो थैंक यू। Okay.
Thank you. Okay, so now what we have done, let me just remove these things, right? We do not need as of now. अच्छा, एक चीज और पाजी, जो ये अगर हम किसी चीज को टपल्स के अंदर देते हैं फॉर्म में तो सिंगल कोड लगेगा, और अगर हम ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ओपन एंड क्लोज ये जो होते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, Parenthesis, right? Parenthesis. Square bracket. parenthesis, स्क्वायर ब्रैकेट. तो डबल कोट्स में होगा, राइट? Yes. ठीक. अच्छा, गॉट इट. मैं गलत बोल रहा था. Okay, so SQL का जब आप यूज कर रहे हो, उसमें आप जब पास कर रहे हो, डबल कोट से पास कर रहे हो एज ए स्ट्रिंग, राइट? Or whereas when you are using, the function and you're passing the column name, then you're passing inside the square bracket and single quote. Whenever you're using this way, then you can pass like this. ठीक है. Is that okay, everyone? Yes sir, yes. पाजी इसके और कितने फंक्शंस होते हैं, मतलब पायस्पार्क के? जैसे ये तो हो गया Functions. रीड, राइट, फिल्टर, डुप्लीकेट्स. So if we want to find it, where we can find more functions for practice? Okay, I will share with you some useful PDF, so you can just read there, right? Sure, thank you. Okay. Done. Okay, so guys, what we are trying to do here, before we proceed, I want to fix one thing here, and that is okay, just a moment. If you want to change some cases, just for understanding, right? If you want to say change some cases, means from uppercase to lowercase or lowercase to uppercase, any transaction you want with any column, then there is a function called with column. Yeah. So let's say that I want to change the name of customers. Do we have customers name or customers first name? Let me just see this. Display. First name and last name. आपका दूसरा है. Let me just see that. Then okay. Okay, we have first name and last name, right? So let's say that we want to convert the first name or the last name, or let's say company, right, in the capital letter or the uppercase. So you have the function called upper, and you also have the function called lower, correct? So easy to use. Let me just say here, and change the anything, city name, let's say city name to uppercase, right? Okay, so in that case you will write can you see it's already giving me what I wanted to write here? That is correct. This is not this is not incorrect, this is correct. So I just wanted to make you understand that if you see here, this is with column. Yeah, with column, then you will give the column name, and then what you want to do with this column. This is not only the uppercase. Yeah, what you want to do with this column, you can do it. And why we are mentioning here customer underscore df equal to customer underscore df? Okay, because customer underscore df is a data frame which actually has the customer's data in the form of table, right? Correct. Yeah. So now here what we want to say, okay, the customer df should contain the data that should be with the
transformation or the conversion of city column name to the uppercase. Yeah, we are saying with column. So this is just a variable, just understand. So we can type anything here in the customer DF in the initial as a variable name. Yeah, generally it is a DF, right? It's a data break, but ultimately it's a variable, right? It's containing the data, correct? So what we are trying to do here, we are just trying to convert the text from the whatever case it has to the uppercase, correct? A simple, a simple transformation. Clear? Yeah. So just run it. Harish, hello. Have you stored? Sorry. Import any library? Hello. Yeah. Which library you have stored before implementing this? See, this library is for SQL, right? So PySpark.SQL.functions. Yeah. So we are just putting the SQL function here, and you can, if you go to the up right here, you will say we have used import star. That means all the functions we are pulling here. If you want only call function or upper function, you can also pull only specific function here, just like call or upper. So you can just type here, right? Upper. So it will only pull that function. But I do not write like this because I don't know what function I will need in my transformation. So I just need all the functions from the SQL. Clear? Okay. So do we need install any library, because the same type of things we have seen in the Python pip install library some, then we will be able to implement those libraries. So like here we don't have pandas. to install anything. Why? Because Databricks already has the environment. Okay. Yeah. But like yes, Python. for the Python or for the VS Code, you need it, right? Yeah. Yeah, you have to pip it, correct? pip install and then libraries. Yes, there you need it. But here it is already there. You just have to call it. Okay, understood. Because it's similar like Python. The coding is same. Obviously. Yeah. So now I was just saying that we need to display okay, I just need to see right here. Now, can you see here in the city column? Yeah. So it's simple transformation. My motto was not to show you the upper or lower function here. My motto was to show you the with column. That is pretty much important, right? We do it, we use it, right? Correct? So whatever transformation you want with the column data, any of the columns, right? You can just use that. Okay, guys. So the for different transformation, I will be sharing a PDF with you. What transformation you can do with the column data? Yeah. So you can practice it. Correct? Clear, everyone? Yes, sir. Now the next thing what I'm trying to displaying. Sir, one thing I want to ask here. Yeah. So while like entering our code in like cell by cell, or you are entering in a one cell like multiple code, so what would be like a best way to typing a code, sir? In cell by cell, or it is in a one cell multiple code? No, I will say cell by cell, and each cell should have a separate section. Just say, okay, for reading, I have taken this cell, right? I'm not doing any transformation here. For transformation, I'm taking this cell. So my each cell, so you can just type the code here. Okay, the comment here, let me just type. Generally, when we say here, cell 1, right? Cell 1, import libraries. Yeah, this way we should also say here for reading purpose. All these are actually for reading purpose. Let's say cell 2, and that should do, that is already written there, right? The configuration, correct? Cell 2, yeah, and cell 3 we are reading the source data, so we can just say here cell 3, then we are saying okay, read source data, correct? Yeah.
Okay, and then in cells 4 do some transformation like that. Cell 4 do some transformation for reading purpose, right? So it just actually, whenever you will see this notebook again, or somebody else is looking this notebook, that person can see, okay, this cell is being used for this purpose, because this time we have only few of the codes. It can have a lengthy cell here, and it can have multiple lines here of the code, correct? Yes. Yes. So it is better if you mention everything like cell 5, create source, sorry, okay, we need destination, right? We need destination connection. That is, we are going to create JDBC. Yeah. Now, when you type JDBC, it will show you the references, right? Yeah. Okay. So before that, what I need few of the variables, right? So one thing, we need JDBC post name. You will type here. Don't worry. If you see, it is already typing there. Can you see? And that is the way, right? It works. And that is correct. That is not incorrect, right? It is correct. But we are not going with this. Don't worry. We will type like this. Then we need port. That is correct. And then we do not need the schema. We just need port, right? JDBC hostname means? This is the server, right? Your SQL server. Okay. Yeah. So JDBC port we need here. So let me just have one thing here. URL we need, and we do not need all these things, right? Just leave it. Port, that port will be 1433 for Azure SQL Server. And for URL, we have to see the URL, correct? Come on. Okay. For host name, you have to pick your SQL Server string, right? So go back to your SQL and sorry. We need SQL Server. This is, can you see server name? This is, yeah, you just need this one. Come back here and paste it here. Clear? Show me once, sir. Yeah, here. When you open your SQL Server, go inside your resource group folder and click on SQL Server. Yeah, you will see this page, and here you will have server name. Okay. Just copy this. Okay. Okay. And 1433 कहाँ से आया सर? Say again. जो 1433 है. 1433. हाँ. PD जो है number. This is the port number, right? For SQL, Yeah. Azure SQL. So it is same for everyone, or it is different for others? No, it will be same for Azure SQL Server. सर 1433 SQL सर्वर स्पेसिफिक है क्या कुछ? Azure SQL सर्वर. Yes. ओके. सर पीछे जाना एक बार पे. Yeah, sorry. कोड पे जाना. क्या लिखा है आपने? Okay. So this is a default TCP actually, right? So let us be also do it. सर इसका मतलब ये पोर्ट नंबर जो है 1433 ये Azure का listening port है क्या? Yeah, this is actually default TCP port that is used by MS SQL Server, right? And this is including Azure SQL Database. Just understand it. Okay. और सर जब 8080 यूज करते 8080 वो क्या चीज के लिए करते हैं? 8083 या 8080 उसका मुझे देखना पड़ेगा कुछ. अभी मुझे इसका पता है.
ठीक है, बता दूंगा ये देखो। तो टॉमकैट का होगा शायद, अपाचे टॉमकैट। अच्छा ठीक है, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है, क्लियर। ठीक है, जी कोड दे दोगे आप पूरा आवाज कंप्लीट कट रही करके? है, हु इज स्पीकिंग, आवाज नहीं आ रही ठीक से। आप कोड ये दे दोगे कंप्लीट करके चैट पे? हाँ वो मैं दे दूंगा, तो कोई इशू नहीं। हाँ सर, लास्ट में नोटबुक डाउनलोड करके भेज दीजिए चैट पे। हाँ दैट इज गुड, चैट पे या फिर व्हाट्सएप के आप ग्रुप पे डाल दीजिए। दैट इज अ गुड आइडिया, ठीक है। अभी बनाते हैं URL, राइट। So generally it should be like JDBC URL. Okay, it's just showing me. Okay, do not go with this. I will say F. Yeah. Now it says me JDBC. Yeah, and then I will go with this as of now. Yeah? And it says JDBC URL should be start with F and then JDBC.SQL server, and then here JDBC host name, which we have already taken, then JDBC port, and then database name. You need the database name here. Yeah. So database name is let me just see. It's sales DW, right? So just type DW here. कहाँ देखे आपने सर? सेल्स Yes. डीबी Here, Okay. sales DW, right? डेटाबेस, That will be correct. And then and then we required username and password and all those. we need the username and password. So what is the password? Admin. Let me see, because I also forget the things, right? Let me log in first here. So user ID and password भी Azure password admin का वैसे सर, required. Azure admin सर्वर में। Azure admin, that is the username. We'll type here, and then let me have the password here. Let me just type the password. Otherwise, I have to reset it. पाजी JDBD का मतलब क्या होता है? JDBD नहीं है, it is Java database connection. JDBC. JDBC is Java database connection. Yeah. So generally it's an API, yeah, that is called Java API, right? So if you want to know the full form, that is Java database connectivity. Yeah. So JD Java database, JDB Java database connectivity. Yeah. Come on. So it is also a connection string. Yes. तो मेरे दो क्वेश्चन है इस पे। एक तो ये है कि अगर इफ वी आर यूजिंग JDBD, राइट, then we have to connect with the the SQL server on Azure itself, right? Just hold on, And guys. Otherwise, I will forget. Just hold on. Mhm. Yeah. Now tell me what you're saying. Just tell me. ओके, मतलब आप कोड पे जाओ वापस। Mm-hmm. अभी तो ये हमारा जो जो भी हम ले रहे हैं, ये कनेक्शन सर्वर जो है JDBC जावा डेटाबेस कनेक्शन जो भी है, वो हम एज्योर में से ही, एज्योर का ही SQL सर्वर का डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? Obviously. क्योंकि हम, ठीक है, और इन केस अगर हमें इसमें से ऑन प्रेमाइसेस पे करना पड़े तो नहीं भी सेम चीज? नहीं होगा ही नहीं। ओके, क्लाउड पे तो हो ना। हाँ, एक चीज दिस हमेशा याद कोड इज, रखो, जो क्लाउड पे चीजें हैं वो कभी भी पर्सनल नहीं होती। मतलब आप ऑन प्रोमाइस उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे इजिली। जो क्लाउड पे हैं उनको क्लाउड पे ही डेटा चाहिए होता है। इसी रीजन से ही आपके पास ब्लॉब स्टोरेज है। आपको ब्लॉब स्टोरेज पे उसको कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ेगा, तभी आप उसको ले पाओगे, और एसक्यूएल के अंदर लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास ठीक है, ऑन प्रेमाइस, इफ यू हैव डेटा इनसाइड योर ऑन प्रेमाइस एसक्यूएल सर्वर, you have to migrate it to the Azure SQL server, then you will be able to use it. Clear? क्लियर। सो दिस कोड इज स्पेसिफिकली फॉर क्लाउड ओनली? Yes.
Let me just try it. If just showing me any error. Come on, it shows me this one. What is the problem then? Okay, I got it. We do not have the double quotes at the end, right? That is the issue. Can you see? In this line, it is not ended. Yeah. Now it is run. Yeah. Now it is working. Any question, guys, till now? नहीं पाजी कोड दे दो बस चैट पे. Okay. But you have to type your remember that. My credentials, I got it. Okay, your your host name here, and then your database name here, and then your credentials here also. Otherwise, it will not work if you copy paste. Host name SQL Server Sales Database Windows.net, ये कहाँ से लिया सर आपने? This one. This is Host the name. default line. When you type it, it will show you, and just take it. It's simple. No, this ऊपर वाला, ऊपर first line वाला host name. होस्ट नेम JDBC होस्ट नेम. ये वाला. JDBC, हाँ. ये वाला. First line. ये वाला. हाँ, ये वाला पूरा line. This is coming from your SQL Server instance, right? So go back to your SQL Server and take the server name from there. And then .database window.net we have to type. It is already there. Just go there. Inside. I'm just sharing my screen, Paji. Just help me out so that Okay. I can Okay. This is I have run. No, go to Azure. Go to Azure portal. Yeah, जा रहा हूँ Paji, जा. Okay. Go to SQL Server. Azure portal. SQL Server. I can see. SQL Server. इस पे क्लिक कर दूं पाजी? Yes. Now you will see on the right hand side server name. The last option on the right hand side, you will see server admin. Can you see server admin? The last line. See the last line. Yes. Okay, server name, right. You have the copy button there. You just copy there, right? हाँ, अभी मैंने लिखा नहीं ना, अभी तो आपसे कोड लिया है, चैट में लिया है, कॉपी करना है. पर ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो मतलब रोड ब्लॉक बनती हैं. नहीं बनेगी, परेशान नहीं हो, नहीं बनेगी. एक बार यूज टू हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं होती फिर. Yeah, I'm stop sharing my screen. Okay. So that's done. Now we have successfully created the connection to the destination, right? To the SQL Server. Now what I need next? I need to load the data from CSV to the staging table. Before that, what we will do, we will remove the data from the CSV. मेरे में एक स्टेप और जुड़ गया है वहाँ पे सर. JB या JDBC DB table equal to customer. So do not take that. Just take only हटा whatever. दो इसको. Yeah. Otherwise, it will create another, unnecessary errors and probably. पर मैंने उसको चला दिया है, एक बार रन कर दिया है. अगर दोबारा करूँगा तो फिर क्या होगा वो? करो, कोई बात नहीं. करो. वहाँ से उसको रिमूव कर देगा. Yes, I will say. Okay. Okay. SQL Server में से हम क्या हटा रहे हैं अब? But I'm trying to do it here. Truncate. Let me just do one thing. Sales dot customer staging. Will that work? Come on. Okay, we have nothing here, right? What we are trying to do here, we want to take the data from the CSV file and push it inside the customer staging and sales staging.
सर थोड़ा इसके साइज थोड़ा इंक्रीज कीजिए सर, एकदम बिल्कुल नहीं इसका दिख साइज रहा। शायद ही इंक्रीज होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं इंक्रीज करने का, ये एक्चुअली शायद एप्लीकेशन कंट्रोल और स्क्रॉल करेंगे तो शायद हो जाए। वो उस पे ब्राउजर पे हो जाता है, ये अच्छा, ब्राउजर इस नहीं पे है नहीं ना। होगा। ओह। हाँ, इसमें ऑप्शन ही नहीं है वो कहीं करने का, देखो हाँ सर, नहीं होता है इसमें, नहीं होता, मैंने भी ट्राई ऑप्शन। किया, नहीं होता। Let me just see here if we have that, sorry, yeah, it is there, come on. हाँ, क्योंकि वो वीडियो फिर अगर वो पोस्ट होगी तो वहाँ नहीं दिखेगा। अभी दिख रही है, ठीक है, हाँ हाँ, क्लियर सर, थैंक यू। और छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना बड़ा ठीक है, हाँ हाँ, तो ठीक enough। है, okay. Okay guys, so now what we have done, we have dropped the data from the customer staging and the sales staging. Now we are going back here. Here we will push the data from the CSV to the customer staging and sales staging. So let's try to push it. So customer df dot write. Whenever we say we are going to write something, we use write, right? Okay, and then it is showing me. So I will type it instead mode. Sorry, mode. Then overwrite, overwrite, sorry, ite, overwrite, that is correct. And then we need another, here dot jdbc, yeah? And inside that we need url. So jdbc url we have already given, right? And then it says customer, just let it be, and then we will change it. So url should be jdbc url, which we have already decided earlier. If you see in this here, this is the url, yeah, that is saying the database, right? And then the customer staging table, yeah, we have customer staging table. If you see here, come on, that is the issue right here. To show you, then again I have to make it like this, yeah, here. So we have customer staging, correct? So we have taken customer staging, okay. Then it says we do not need all those things, yeah. Just customer staging, and then properties, because we already given the modes, we do not need mode here, we just need properties here, yeah. Properties should be it should be connection property. Let me just see, because we already have created, okay, just let me see, user is jdbc username, that is correct. Come on, jdbc password is jdbc password, and driver is equals to jdbc driver, that is correct. And then, okay, just remove this, right? We just need to see this one only, is that working, or it's showing an error, right? Okay, so now we have written the data inside the customer staging. Go back to your SQL and see here. Sorry, that was correct. We just need to change this one. Customer staging. Run this one only. Now it's not showing the data. Why? आपने ट्रंकेट सेल्स में किया है। There is one mistake, I think so, and that is the schema name, right? It is not here showing the error, right? But the problem is that we have not given the schema there, right? The sales. It should be having the sales dot. Now see the data. Yeah, now data is there. Correct. The problem was we forgot to give the sales schema here. Yeah. So whenever you are giving the table, right, you also consider the schema as well, either DBO or the schema which you have created specifically. So here, if I go for, let's also do the same thing here for the sales, and run this code. Oh, sorry, run this code. You will see nothing is there.
Now I'm going to do the same thing with the sales one. So my cell would be, oh sorry, what is the cell name? Cell 6, right? Cell 6, and here what we are doing, write the data showing us CSV to staging table in SQL Databricks. Correct? Yeah. Okay. Yes. So now overwrite. Oh, sorry. Once again, take it salesman, sales tier, right? And then override is correct. Now the table would be sales staging. Rest all are Remove correct. sir extra DF sir from sales, like Oh, in a yeah. sales. I really appreciate your eyes, man. Okay. So now it should work for both. Now let's again run the same query. You will see the data. Got it. Yeah. Sir, one thing, sir. Please go on the query code on our here. So here we are just mentioning like override. It is override. It is the comment, sir, or it is No, what it's a is the mode. override? It's a mode. We are replacing the data, right? We are just replacing the data. You can append the data. You can replace the data. ओके पाजी कोड दे दीजिएगा चैट And पूरा GB GDBC URL. सर ओवरराइड की जगह पे और क्या लिख सकते हैं? Append, जैसे अभी append. append is the word. बट उस केस में स्कीमा सेम होना चाहिए ना पाजी स्कीमा नहीं हाँ 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 यस वो करेक्ट. कह रहा है कि ये कोशिश कर रहा है इसको लिखने की, ठीक है ना, इस टेबल में लिखने की. अब वो टेबल कहाँ है? स्कीमा के अंदर है. ठीक है. कनेक्शन ऑलरेडी आपने दे ही दिया कि किस कनेक्शन पे है. ठीक है. और उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड इसने दे ही दिया है. नहीं पाजी फॉर एग्जांपल अगर अच्छा आपने वो पहले वाला टेबल उड़ा ही दिया ब्लैंक स्कीमा ही ब्लैंक कर दिया था ना हाँ उसका ट्रंकेट किया हमने पहले. ट्रंकेट की ओके पाजी truncate कोड दे दीजिए कॉपी करके ट्रंकेट तो हमने वहां पे किया ना सर, एसक्यूएल में जा करके. ऑब्वियसली यू कैन और आल्सो उसी टेबल को Blank हो गया हमने ना, यहाँ से blank हो पॉपुलेट गया. किया. पहले ओके. ट्रंकेट किया और हमने जो टेबल हमने को. और जो हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है फाइनल, इसको हमने वहां पे सेव करेक्ट कराया. करेक्ट. ओके. और सर यहाँ पे यूजर नेम, यूजर एंड पासवर्ड, दिस इज डिसाइडेड बाय अस सर, और ओके. पाजी कॉपी करके दे दो कोड पहले. दिस इज अ यूजर नेम, दिस इज द हाँ वो तो ठीक है सर. ठीक है. यही यूजर नेम पहले डिफाइन करा है ओके ओके गॉट इट. पहले डिफाइन किया है तब साइन किया उसे. पाजी कोड दे दीजिए ये वाला 6 वाला. ठीक है. समझ में आ गया ना? तो ये सर मैं थोड़ा लिखता हूँ, थोड़ा होल्ड कीजिएगा सर. दैट्स नॉट अ पाजी बिग थिंग. या आई विल शेयर द कॉपी कोड. करके दे दो. The major thing is that, do you understand? हाँ Yes, जी. sir, yes, sir, understand. अंडरस्टूड. Okay. सर एक बार अपेंड का भी केस लिख दीजिए ना नीचे कोई भी एक टेबल के लिए. Okay. So just a moment. मुझे ये अपेंड और ओवरराइट पे थोड़ा डाउट है सर. इस पे मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा है. Okay. Overwrite means उसको ओवरराइट कर देगा, पुराना डेटा हटा के नया नया डालेगा. डालेगा. ठीक है. Append means add new rows underneath the previous rows or existing rows. तो सर इसमें मतलब ये इसका फंक्शन है या ये इसका कीवर्ड है पाइथन का? हाँ, इसका कीवर्ड है कि हम राइट कर रहे हैं डेटा को रिप्लेस करके, और ठीक. हम राइट कर रहे हैं डेटा को अपेंड करके. अपेंड करके. ठीक है सर. तो अभी एक काम करते हैं. हम ये बात कर रहा हूँ सेल्स की, राइट? तो यहाँ पर एक काम करते हैं. लेट्स सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टाफ फ्रॉम सेल्स डॉट सेल्स स्टेजिंग, राइट? सर दिखा रहा है नीचे रोज 2823. 2823. ठीक है. चलो इसको रन करते हैं. डन. वापस देखते हैं.
प्लस हो जाएगा। 5646। बट और पाजी इसको इसमें रो इसमें अपडेट हो इस जाएगा। पाजी सॉरी, इसमें कॉलम नेम तो सेम होना चाहिए ना। अगर कॉलम नेम सेम नहीं होगा तो वो एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देगा। कहाँ लॉजिकल तो वही CSV से होना और चाहिए। इसमें? न- किसी में भी, मतलब अगर जिस पे हम अपेंड कर रहे हैं, हम्म ठीक है, हम्म लेट्स से अगर मेरे जिस टेबल, जो मेरा प्रीवियस टेबल है, अच्छा, उसमें कॉलम नेम है समझ गया, समझ ABCD है, और नहीं, नया नया कॉलम नहीं बनाएगा ये। कॉलम आपका वो आएगा ही नहीं यहाँ पर। उसको स्किप कर देगा वो। जितना आएगा मतलब नहीं। यहाँ पे स्कीमा है उतना ही लेगा, बाकी को हाँ, वो क्योंकि डिलीट ये कर देगा। फिजिकल स्ट्रक्चर को कभी चेंज नहीं करता है। हम्म योर स्कीमा इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल, राइट? उसको हम्म, चेंज नहीं करेगा कभी भी। जो कॉलम बने वही बने रहेंगे until ठीक unless you will add the new column. ठीक रिसीवर एंड पे जितने कॉलम नेम्स है ना उतने ही एक्सेप्ट होंगे। अभी ठीक है समझ में आ गया? जी। पाजी कोड दे दो ना कॉपी करके। हाँ, कोड दे। तो मैं सोच रहा हूँ कोड ये डाउनलोड जो है डाउनलोड करके दे दूँ ना, ये कह रहा हूँ। सर फाइल से वो डाउनलोड होता है फाइल ना। से वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। मैं एक्सपोर्ट कर नहीं, सकता पहले ये ऐसे ही दे दो, बस कोड 6 दे दो पहले। हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ ना। हाँ सर। ओहो पाजी, मैंने अपने उसमें किया हुआ, मैं कॉपी अच्छा ठीक है, पेस्ट ले मार लो ले दूंगा। लो। कौन सा चाहिए? ये चाहिए? कोड 6 सेल 6, ओके। सेल 6 पूरा। तो मैं अपने में कर लूंगा सीधा। और ये ऑटोमेटिकली सेव होता है ना सब कुछ? हाँ, ठीक है। फिर भी अगर इफ यू नीड आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट, ठीक है। और गुड। एक्सपोर्ट करके मैं आपको इसका वो दे देता हूँ, नोटबुक दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट टेक दिस नोटबुक, कम ऑन। सर ये आप व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए। चैट के पे इसमें तो कॉल एंड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है। मैं फिर भी भेज देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं हाँ हाँ, आप यहाँ पे भेज दीजिए। कर कम ऑन। लेगा। अरे यार, इतनी छोटी चीजें क्यों लिखी होती हैं? ऑल्सो व्हाइल एंडिंग द क्लास मुझे वो एक बार एलटीएस का वर्जन देखना है सर, क्योंकि मेरे को भी कंप्यूट बनाना पड़ेगा। तो मनु ने भी शायद कंप्यूट यूज किया ना कि सर्वरलेस यूज किया? कंप्यूट। कंप्यूट मैंने भी में कंप्यूट यूज किया। हाँ, मुझे एक बार वो वर्जन एलटीएस दिखा देना कौन सा ये है, देख लो यहाँ पर 17.3। है। 17.3 है ना? ठीक है, मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ फिलहाल इसको। अननेसेसरी ये चार्जिंग चार्ज कर रहा तो होगा सर मुझे। एक बार मुझे कोड ये लिख लेने दीजिए, थोड़ा इसको रखिएगा मैंने यहाँ पे। नोट वो दे रहा हूँ ना, पूरा नोटबुक दे रहा हूँ ना। ठीक है। कर दिया वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने, वो आ जाएगा अभी थोड़े टाइम। कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट कर दिया, बस मुझे भेजना है। ठीक है, जी, अब ये भी देखो। लिखे हैं हम पाइथन, स्पार्क स्पार्क पाइथन कोड्स, राइट? सॉरी। जो भी आपने कोड्स लिखे हैं, हाँ, ये आपने स्पार्क पाइथन में लिखे हैं, राइट? करेक्ट। पाइथन तो लैंग्वेज है, ये हाँ, ये पाई स्पार्क है। बाई स्पार्क। हाँ, स्पार्क पाइथन इज एन इंजन, पाइथन इज अ लैंग्वेज, दोनों को मिक्स करके जो हम पाई यूज स्पार्क करते बन हैं जाता उसको है। बोलते हैं पाइस्पार्क। तो सर ये पाइस्पार्क को और डिटेल में थोड़ा हम लोग सीखेंगे, आई बिलीव इन फैब्रिक, राइट? हाँ, थोड़ा सा। देखो, कहने को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है यार। मैं क्या क्या नहीं कर सकता। मैं डेटा को लेकर बहुत सारे सिनेरियोस पे काम कर सकता हूँ, करेक्ट। तो बहुत सारे कोड्स भी हो सकते हैं। अब सारे कोड अगर सीखने बैठ जाएंगे तो पता ही नहीं कितना टाइम लगेगा। नहीं, पर थोड़ा सा एक जो हाँ, बेसिक में हमारा लेकिन जो यूज होता बेसिक्स है। है, करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिक्स है, एक डेटा को लेकर हम क्या क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो हम फैब्रिक में जरूर सीखेंगे। हाँ, क्योंकि वही मेन है सर। अगर हाँ, हम इंटरव्यू में जाते हैं और हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोड हमने लिखा है पाइस्पार्क में, तभी उनको इम्प्रेस कर पाएंगे हम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी। और पाजी, दो चीजें आपने शेयर करनी है। एक तो आपने पीपीटी शेयर करनी है, आप है, और दूसरा आपने फंक्शंस के, आपने कहा था फंक्शन मैं वो नेम्स। लिस्ट लिस्ट बता दूंगा। सर दो तीन चीज़ें जानना है, मतलब इन ड्यूरिंग आवर फैब्रिक क्लास, क्योंकि नॉर्मली ये सर कोई नहीं बताता है। ऐसे तो जैसे डेटा कनेक्ट करना और उसको नॉर्मल ट्रांसफॉर्म करना और फिर बाकी रिपोर्ट्स बनाना या डैशबोर्ड बनाना, ये तो बता देते हैं लगभग लोग। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जैसे हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं ना, इसका स्टेप्स कोई नहीं बताता है जल्दी।
तो मैं वही चाह रहा हूँ कि ये हम लोग पाइस्पार्क में फैब्रिक में एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस करें, एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग एसक्यूएल पे करें कि वो मतलब रियल वर्क कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसक्यूएल और फैब्रिक। तो एक वो, और बाकी जो आपने बताया था पाइपलाइन से और ये सब और डेटा फ्लो से, तो वो भी कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने आपके सामने एक जॉब क्रिएट किया है, ठीक है, और ये जॉब इसलिए है कि ये शेड्यूल हो सके और ये रन हो सके, ठीक है। कैसे किया है फिर समझा देता हूँ। यहाँ पर अभी तक तो हमने नोटबुक बनाया है, ठीक है। अभी नोटबुक बनाने के बाद हमें क्या करना है, उस नोटबुक को ऑटोमेट करना है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप यहाँ पर हो फिलहाल, यहाँ पर सेल्स के अंदर हो, ये नोटबुक है हमारी, ठीक है। मुझे इसे ऑटोमेट करना है, तो यहाँ पर जॉब्स एंड पाइपलाइंस होता है। हम एडीएफ में भी यूज कर सकते हैं इस नोटबुक का, अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ देख लो, यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं जॉब्स को। ये है ऑर्केस्ट्रेट नोटबुक्स। आप देखो ये ऑलरेडी मैंने बना दिया, तो दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज इस पे क्लिक करोगे जॉब पे, व्हेन यू क्लिक हियर it will show you to add the task. It says task, so it says notebook, it already showing me. Yeah, either you can run a notebook or you can add another task. So I will say here, when you click here, it will say a task name. This way you can do it, or you can create the note another task, right? So let me just go back and show you. So just click here and it says notebook. Yeah, same thing, it will show you same thing, right? And now it says name. So let's say staging, custom staging, right? Let's say that you have created different notebooks for different purpose. One notebook is for staging data, second notebook is for curated data, third notebook is for goal data, right? So you have 3 notebooks. So let's say customer staging or staging notebook. Let's say we can say here, come on, staging notebook, yeah. And then it says type of notebook, source will be your workspace, right? And path for your notebook will be under your folder, right? And then confirm, you will see customer notebook and just confirm it, yeah. And then it says compute, how you want to compute. So if you want to attach your cluster, you can attach your cluster. If you want to use serverless, attach serverless. But most of the cases, because whatever we have written inside the notebook will not work with the serverless, we will attach our cluster, yeah. And then create the task. Now job updated, job created and updated. Now here likha, what is written here, run now with different settings, run backfill. So I will not go on that, yeah. Right now you can just run it, so it will start running your, you see trigger on. So now if you see here, just click pending, it is working actually. If you see here, it's working. Can you see duration? It's just working here this way, yeah. So it's queuing and it's working on the resourceless, so it will work. Further we will try to see how we can schedule it. Just working. The problem is that I have now stopped the cluster. First it will start the cluster and then it will start working. So it will take time in that case. Cluster will take time. Yeah. और सर जब ये जॉब खत्म कर देता है, मतलब एंड हो जाएगा पूरा नोटबुक, तो क्लस्टर वापस क्लोज भी कर देगा क्या ये? हाँ, क्लस्टर स्टॉप हो जाएगा। ओके, स्टॉप हो जाएगा, वो तो वर्ड करेक्ट। अभी तो हम मैनुअली कर देते हैं जाके। ये तो स्टार्ट होगी क्लस्टर, जो चल गया ये है, रन टाइम दिखा रहा, पेंडिंग, इनिशिएटेड पेंडिंग, क्लस्टर ऑन हो चुका है। इसका मतलब 2 इंस्टेंस क्यों दिखा रहा है सर? वो एक पहले मैंने क्रिएट कर दिया था, तो उसको डिलीट कर सकते हैं, डोंट वरी, डिलीट द जॉब दैट इज नॉट नीडेड। अच्छा, हाँ हाँ, पहले आप बात कर रहे थे तो करेक्ट। इंटरेस्टिंग है सर, नाइस, गुड। अभी दिख रहा है चीजें ऑटोमेट होते हुए। तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है अगर हम इसको डीपली करें तो, ठीक है। अजूर भी अपने में बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने देखो, मेरा पर्पस था अजूर को समझाने का, ना कि अजूर को फुल अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। इफ
if people want, we can run the class purely on Azure. Even I'm thinking on that, right? Even I'm thinking to have a separate session on सर full 4-5 प्रोजेक्ट बना के मतलब हाँ 4-5 फुल प्रोजेक्ट Azure होगा, से वहां कराओ। पर Synapse से भी कवर करूंगा। अभी Azure Synapse से बाकी है, जहां पर रिपोर्टिंग होती है, वो भी मैं कवर करूंगा। In this course specifically, I have not included Synapse because I do not need it. We are already having the Power BI and the Fabric environment where we can do that. So that's the reason I have not included it. Correct? But yeah, yes, you can use it. So I'm just stopping it. It will, it will run. Don't worry, it will work. Yeah, you can try it by yourself. Yeah. So you can just create the job. I will delete it because I do not want any extra expenses on that. Now, what you can do inside your Azure ADF, just go, come on, where is ADF, man? Okay. Data Factory, come on. Or you can just go to the resource, it will show you then. Users, Data Factories right here. So we have the Data Factory that is, where is mine? Okay, I don't have my Data Factory. I think I have deleted it. Oh. What you can do, you can go inside the Data Factory. Let me just go. सर मेरा ओपन कर लीजिए ना, हाँ टेस्ट प्रोजेक्ट मेरा ओपन कर लीजिए। This one? हाँ दिस वन, करेक्ट। Okay. थर्ड वन करेक्ट। Let's open it. What will happen? I don't know. It will be aligned or not with you. Let me see, because Sam is an admin. If I can see that, and you have limited privilege, right? मैंने सर आपका जैसा ही पूरा का पूरा फॉलो। Okay, so when you create the pipeline, right? Inside the pipeline, let me just create the pipeline. Yeah. So inside the pipeline, you can call Databricks. Yeah, and you will see the notebook. Just take the notebook here, and inside the notebook, you can just, it will not show you. Why? Because it is not linked, right? If I will be using my ADF, it will show me the notebook here, what we have created there, and just use that notebook and run inside the ADF. Get it? वो पाइपलाइन में हम इसको भी एक स्टेप्स बना सकते लाइक हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी अभी मेरे केस में रिसोर्स ग्रुप अलग हो गया है, इसीलिए उस ग्रुप से अटैच जो रिसोर्सेस है वो दिख नहीं रहे। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटाबेस का लिंक सर्विस है वो नहीं दिख रहा। Correct. Okay. Otherwise, when you will pull, that's the reason it says Databricks, right? Okay. That's the reason. Yeah. If you type notebook here, let me just type notebook. So you will see two notebooks. One is Synapse and one is notebook. Synapse is something which is already here, right? So you create the notebook here. I'm going to say in the Synapse, but this is from the Databricks. So Databricks notebook is different. When you click on Databricks notebook, it will show all the notebooks which you have created inside the Databricks. And you can just use those notebook here for the orchestration purpose. Yeah, so you can use the ADF, you can do the activities directly inside the ADF, then use the notebook from the Databricks to perform the transformation, and then finally use another activities to push the data inside, the final table or gold layer, whatever, right? It depends on the architecture. सर ये सेम प्रोसेस तो हम जब हम लोग फैब्रिक पढ़ेंगे तो उसके पाइपलाइन में भी कर सकते हैं। फैब्रिक इज मोर यूनिफाइड। सो वहां पर जो है ना, इतनी बिखरी हुई चीजें नहीं है कि डेटाब्रिक्स उठाना है वहां से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां सिंपल आप डायरेक्टली नोटबुक लिखो, सीधे पाइपलाइन के अंदर लेके आ जाओ। नोटबुक के आप पाइपलाइन के एक नोटबुक बना सकते हो जो दूसरे नोटबुक को कॉल कर सकता है, एक पाइपलाइन बना सकते हो जो दूसरे पाइपलाइन को कॉल कर सकता है। लेट्स से कि मेरे पास एक पाइपलाइन है जो स्टेजिंग का काम कर रहा है, एक पाइपलाइन है जो कि क्यूरेटेड का काम कर रहा है, या यूं समझो कि वहां पर मेडेलियन आर्किटेक्चर होता है, तो पहले ब्राउन्ज लेयर पे काम करेंगे, वो पाइपलाइन हमारा सेपरेट है। फिर we will be working on the silver layer, that is a different pipeline. Then we have a third pipeline, that is gold layer. Now all those pipelines are isolated inside a single pipeline, and that will be here in the orchestration. So in the fabric, nothing called Azure data factory, something like this. There is no any screen of data factory. Yeah, but there is a screen to create the pipeline similar to the data factory. So you will see the same screen, and you can just directly call the pipeline. You can also call the pipeline here as well, but it is not showing me. That means it does not have that capability, because in Fabric, okay, it says execute pipeline. It has that, right? So here you can call another pipeline inside this pipeline. Can you see?
It's showing me PL load staging, file metadata. So it is also having the pipeline. So you can call the pipeline inside the pipeline. Yeah, we do those things in the Fabric frequently. मतलब टू अंडरस्टैंड एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक एक्टिविटी के अंदर हम एक फॉर एग्जांपल मेडेलियन आर्किटेक्चर है तो उसमें ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड तीनों अलग अलग आइसोलेटेड पाइपलाइंस को कॉल कर सकते हैं Correct. एक साथ रन करवा सकते हैं थ्रू अ ट्रिगर Exactly. ओके And then you can schedule or trigger the main pipeline, the parent pipeline. सो मतलब एक एग्जीक्यूट पाइपलाइन पहले रन होगा जिससे हम CSV फाइल से एक SQL टेबल में लेंगे डेटा करेक्ट उसके बाद में एक नोटबुक रन होगी जिसमें सारा प्रोसेस होगा और उसके बाद में वापस एक एंड पॉइंट पे एग्जीक्यूट पाइपलाइन होगा जिससे हम उसको डेटा को वापस कहीं और स्टोर कर सकते हैं Correct. ओके गॉट इट Yeah. So you can do a mix match, right? So you read the data first, then probably you transform the data inside the Databricks, inside the notebook, then you come again and using the different pipeline to push the data there, right? Maybe for the silver or for the gold, whatever. We can have different scenarios there. सर ऐसे ज्योर पढ़ने के लिए कितना समय चाहिए? ओके समय बताऊं ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसका आंसर थोड़ा सा टिपिकल होता है जानते हो क्यों बहुत सारी चीजें करने के लिए ठीक है लेकिन मैं अगर ऐसे कहूं कि हाँ इफ वी वांट टू बिकम एन डेटा इंजीनियर ठीक है और उसके पर्सपेक्टिव से मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज मैं कवर कर दूं तो लगभग 3 महीने लग जाएंगे वीकेंड पे अगर पढ़ते हैं तो हाँ उसमें क्या होगा ना कि पाइपलाइंस हर एक तरह के अलग अलग सिनेरियो में हम बनाएंगे ठीक है बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करेंगे पाइपलाइंस बनाएंगे ठीक है तो मेजरली पार्ट आपका एडीएफ और डेटाब्रिक का ही है और उसके बाद सिनैप्स है 3 चीजें रिसोर्स क्रिएट करना कोई बड़ी चीज नहीं है वो तो विद इन सेकंड्स क्रिएट हो जाता है उसके ऊपर काम करना बड़ी चीज है ना Right. Sir, actually, many of the organization is looking for the data engineer role, and in many of the job posting, I can see there is additionally mentioned there like good exposure if you have a good to have Azure and ADF kind of. हाँ तो So Azure पे देखो my Azure thought is पे that मनु आपको Azure पे काफी एक्सप्लोर हो चुका होगा ठीक है हाँ Azure को हाँ काफी है समझ सर. चुके होगे अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग की तो डेटा इंजीनियरिंग की काफी चीजें हम फैब्रिक में भी सीख रहे हैं ना right. तो आप you can say that you are a fabric data engineer you also work on the Azure environment as well बस सिंपल अब वो Azure के बारे में पूछते हैं ओके Azure में कैसे करोगे फिर फैब्रिक में कैसे करोगे तो दोनों का डिफरेंस आपको दिखेगा Azure में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि चीजें अलग अलग हैं अलग अलग सर्विसेज पे हैं सेपरेट हैं लेकिन फैब्रिक में सब चीजें यूनिफाइड है तो बहुत इजी है वहां पर Right. एक चीट कोड दो क्या सॉरी एक प्रोजेक्ट के लिए चीट कोड दो शरद और मनु के लिए नहीं क्या आपके पास है चीज? बिल्कुल शेयर करो यूट्यूब पे कोई भी एक पाइथन का प्रोजेक्ट ले लो ठीक है जैसे कोई एक CSV फाइल से कोई डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सारे कुछ थ्रू पाइथन ठीक है उसी सेम चीज को यहाँ पे डेटाब्रिक्स में रेप्लिकेट करने का कोशिश करो डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि पाइथन की जो लाइब्रेरीज है जिसमें वो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं यूज कर रहे हैं उसको चैट जीपीटी में डाल के पूछना कि इसको हम डेटाब्रिक्स में अगर करेंगे तो पाइस्पार्क के क्या फंक्शंस यूज होंगे ठीक है एंड एज इट इज वैसा ही प्रोजेक्ट डेटाब्रिक्स में बनाओ यूजिंग पाइस्पार्क ठीक है वैसे 3-4 प्रोजेक्ट बना लो डेटाब्रिक्स का हैंड्स ऑन हो जाएगा अच्छे से उसके बाद में इंटरव्यू के टाइम पे बोल सकते हो कि हाँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पे हमको ये सर्वर यूज करना पड़ता है उसके पीछे कंप्यूट बनाना पड़ता है उसके बाद में नोटबुक के अंदर हम ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं एंड उसके बाद में वो डिटेल में आपको फंक्शन नेम पूछेंगे कि फंक्शन नेम के टाइम पे क्या करना पड़ता है जैसे फिल इन करना होता है या नल वैल्यूज निकालनी होती है तो क्या कर सकते हैं जो पाइथन में यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेम चीज यहाँ पे पाइस्पार्क में थोड़ा सा नाम शायद डिफरेंट होगा मुझे तो डिफरेंट दिखा नहीं बट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो सेम ही रहेगा मुझे लग रहा है कि आपके साथ मुझे सेपरेटली कनेक्ट करना पड़ेगा. guys okay guys I'm stopping the recording because Yeah,